Wholesaling dope on the fucking track. If you got some chronic right now, smoke you a sack. No break a bitch, make her make your money, make it G. If you got weed, well, smoke a sack for me. If you getting wholesaling dope on the fucking track. If you got some chronic right now, smoke you a sack. No break a bitch, make her make your money, make it G. If you got weed, well, smoke a sack for me. हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो? हेलो भाई, बहुत डेंजर दिख रहा है क्या अभी? भाई बहुत डेंजर दिख रहा है अभी। देखने का है क्या तुम लोग को? देखने का है क्या? देखने का है क्या? बस हाँ बोलो तुम लोग, हाँ बोलो बस, हाँ बोलो बस, मैं आ जाऊंगा। Hey yo, what is up cheese? Hello भाई साहब, ऐसा लुक करने के बाद ऐसा है ना, ऑटोमेटिक ऐसा आवाज निकलता है बे। Hey yo guys, what is up bro? How you doing brothers? Hey, what is up cheese? What's up? Hey homie. ऐसा ऑटोमेटिक निकल रहा भाई, ऐसा गले से, मैं ट्राई भी नहीं कर रहा। Welcome back to another watch party live stream. Hope you guys doing well. Hope you're having a wonderful day today. If not, your boys here. Make your day much better again and again. Dope मेरा भाई, welcome back to the Pow Gang. Welcome back. Dope भाई का वेलकम करिए यहाँ पे चैट में। आज देखेंगे अपन कौन ज्यादा मारेगा, कांग 4 सेकेंड या समथिंग। भाई अभी तो 4 सेकेंड को मैं गिनती में भी नहीं ले रहा हूं, कांग या समथिंग। डोंट बी पोटेंशियल कैंडिडेट। ओके चल ट्रायल लेते हैं क्या? ट्रायल लेते चड्डी इग्नोर करो, ठीक है ना? करना मुश्किल ही नहीं, नमकीन नामुमकिन है। रहने देते, मैं डायलॉग नहीं रहेगा तो चलेगा, मतलब ये क्या है? Gwat damn hottie. What बोले तो? Thank you Shinobi भाई for the 40. You just called me a hottie. Oh my god, dude. Hey, thank you. Lemon. Thank you so much for the 40 rupees. मेरा भाई Shinobi, how you doing? भाई कुछ भी तू इसको मोतिया बिंदु कैसा बोल सकता है भाई? इसको मोतिया भाई, ये ड्रिप बोलते हैं, इसको ड्रिप बोलते हैं, ठीक है ना? अबे मैच चालू हो गया बे। रुको
मैच चालू हो गया भाई लोग, मैच चालू हो गया है। मस्करी नहीं कर रहा मैं, मस्करी नहीं कर रहा, मैच चालू होने वाला है क्योंकि 12:30 ऑलरेडी हो चुकेला है ना भाई, 12:30 ऑलरेडी हो चुकेला है। रुको अपने को अभी है ना कैमरा सेट करना पड़ेगा पहले, तो सेटिंग जरूरी रहती है भाई, सेटिंग के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। अभी चालू हो गई माँ कसम सही में। नहीं चैट किधर है इधर, चलो सब चालू, लेट गो लेट गो। चलो सॉर्टेड क्या, आ गया गाना आ गया मेरा। This song hits good. This song hits good, bye. Sheesh. I love this song. To be honest, Oh भाई ये कौन I है? just come to challenges. Hey, let's go. It's like dream become reality. I'm really proud of my team because we all believe in each other and we had something. Wow. I think we are even stronger. Wow, Also these guys are so good. station, But I come to stage just for fun, enjoy my game with my teammates, show to world we can. Doing like speed from Ohio. Against Crew is gonna be one hell. Thank you for the 40K tool. Un poco la clave de lo que fue el LCQ fue la preparación que tuvimos de tener un mes y medio de preparación y empezar a mejorar la relación entre nosotros. Crear un भाई poco क्या I flew कर रहे हो यार, अच्छा नहीं लग रहा क्या भाई, भूत el मारूंगा। momento más duro de que todos tipo dudaban de nosotros es donde más nos भाई मेरे को tenemos अभी que unir चश्मा y चेंज decir, करना है अपना, मेरे को भी ओपी दिखना है "Solo यार। nosotros y vamos a unirnos para hacer historia." समथिंग का शक्ल नहीं याद, समथिंग का शक्ल नहीं याद तुम्हें? O sea, de que digan, ¿se acuerdan de ese club que ganó Champions 2023? Que cada uno sea un poco la estrella. भाई लोग y dejar मैं क्या esa बोल रहा, memoria para- मेरे को बताओ मेरे को बताओ कि बिली गेमिंग और फनाटिक में कौन जीतेगा? तुम लोग तुम्हारे स्कोर प्रेडिक्शंस बताओ, हु विल विन इन इट। मैं बताऊं तुम लोगों को मेरे स्कोर प्रेडिक्शन, फनाटिक वर्सेस बिली गेमिंग में बिली विल टेक वन मैप, फनाटिक विल विन द सीरीज, इट विल बी अ 2-1 फुल टाइम स्कोर भाई, क्योंकि लिटरली मैं कल सोचा था एनआरजी 13-0 करेगी बिली को, लेकिन भाई उन लोग ने जो खेला है, उनके रेज ने जो शॉटगन चलाया है, उनका हर एक प्लेयर अभी दिमाग में बैठ गया, इतना अच्छा खेला है हर एक प्लेयर उनका। कांगकांग भाई ओपी। Like speed अच्छा ये from कांगकांग Ohio. नहीं था क्या वो? कांगकांग कौन है बे फिर? वही तो था, है ना? वो नहीं है क्या? एंड ब्रो स्पेक्स का ट्राई मेटल फ्रेम ट्राई करो क्या? ऐसा पहन सकते हो उसको? वो भाई डिमार्ट के बाहर फोटो शूट कर रहे हैं। villain, then I'll be the best villain I can be. 因为我要随时保持一个很谦逊的 हर्ष 心 भाई 态 क्या 去 हालचाल, 保持 तबीयत 这个 वबीयत कैसा? 挑战 एकदम 的 मस्त रे, नॉट सो स्मार्ट भाई। तुम बताओ कैसे? वही था ना? वही है A lot of my friends kind of know that I'm भाई। kind इनको of रोज क्यों दिखा रहे हैं Jordan फनाटिक fan. को? Even the legends have experienced tough losses or tough बात तो सही है moments. डर का भाई। Some people actually put the hard work. They're really confident in themselves. भाई ये and क्या actually जर्सी है बे? ये जर्सी ला दो कोई तो, get माँ to the कसम। top. 做出了一件非常正经的事情。 नाइट भाई मेरे नए非常喜欢 फेवरेट 这种 प्लेयर है भाई।就是逆袭 ये 的 बंदा 对 मेरा नया फेवरेट प्लेयर है, ये नाइट बंदा। आई लव दिस गाय। नहीं ये नहीं, दिस गाय। 我们是一支 This is one of the 积极向上 favorite 的 guy भाई।不怕困难的队伍，无畏的队伍吧。 Team will teach BRG how to play against structured team. It really gives individual भाई play. वो इतना गला फाड़ के चिल्लाता ना, ऐसा 2 हाथ पहले उसने लिया, फिर उसने सोचा कि भाई बोलूं कि नहीं बोलूं, फिर जोरदार चिल्लाया उसने, एफएनएस आई ओके। अच्छा भाई बहुत हो गया, अब एक हेडफोन स्पॉन्सर कर दो भाई। अमन मैंने बोला है तेरे को, मैंने उनको पूछा है, मैं एक बार वापस उनको पिंग करता।
congratulations to you both on making Champions 23. We'll just jump right in. PRX, you are the higher seed. Team A or Team B? Team B. Team B. So KRU, you will be Team A. And we'll start with your first ban. We ban Fracture. They ban Fracture. Your ban? Haven. Haven. And map number 1. Split. Split. आजा मुंबई PCT चैंपियंस में सिर्फ विनिंग टीम्स आती है यस चलो पोल लगा रहे हैं हम लोग बताओ पोल में Pearl, side PRX या KRU defense. Okay, next set of bans starting with KRU. You have Ascent, Bind, and Lotus. Bind. Your ban, you have Ascent and Lotus. Lotus. We ban Ascent. Ban Ascent. Map number 3 will be Lotus. KRU, side on Lotus. Defense. Okay, gonna run through this really quick. Make sure we're all set. 83% people are saying PRX. Haven. Map number 1 is Alright. with PRX on attack. Let's see what happens, Map number 2 boys. is Pearl with KRU on defense. Next set of bans are. भाई लोग ये गेम है ना एकदम W गेम होने वाला है अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन है क्योंकि भाई साहब दोनों टीम्स तगड़ी है तगड़ी बोले तो तगड़ी भी नहीं है एकदम ही खोबड़ी खोबड़ी है भाई आ जाओ भाई आ जाओ वॉकआउट आ जाओ वॉकआउट भाई इम्पैक्ट फॉर द विन लेट्स गो Yay! Something भाई फोड़ दो आइचा गावा धुरवा कर दो Ew, that was so bad. It's the plucky underdogs from the Americas that was so region bad. versus the dominant force from the Pacific. You got PRX taking on KRU in a matchup that has been hotly anticipated once the brackets were revealed. Sean, this game is going to be awesome. I got the nerd chills going right now, GB. I am 1000 D this matchup right now, and the map pool is so fire. I think KRU has a. I actually think they have a chance. These are maps that we saw them dominate on in this LCQ run. Their defaults are so strong across all 3 maps. But what does PRX bring to the table? They're going to bring out some kooky comps. It's going to get crazy in here. They go crazy. PRX has their own playstyle. They have their own game. They can do whatever they want, and they don't copy anybody. I want PRX to win, लेकिन KRU जीतेगी? क्या बात कर रहे हैं? Pretty good for them, I would say. तुम लोग को लगता है KRU जीतेगी? नहीं भाई, आज something है. Something खोबड़े चौबड़े कर देगा भाई सबका. समझ रहे हो? OP गेम प्ले. ओ भाई 4 सेकंड भाई कल है ना एनआरजी वाले भी ऐसे ही हंस रहे थे मालूम क्या मैच चालू होने से पहले एकदम हंसी मजाक में चल रहा था उनका ठीक है नाच रहे गा रहे थे भाई आए हार के चले गए साहब इसकी बहुत Yeah, I do feel like KRU have a chance. They do, and like you said, I mean, split off the bat, right? This is a map Kesnet really just destroys on the raise. They finally got the jet when they allowed Davies to go to chamber. That's something that KRU tampered with or tinkered with all throughout that LCQ run. Oh my God! Go onto the chamber that frees up the raise roll, so that way Kesnet doesn't have to be the star offer. He can be that dominant util heavy raise, and I think they're gonna still go with that throughout this champs tournament right now. अभी वो क्या पहना था चैट? You have to wonder though, baby Bay. Like, yes, they got split. They got a good map for their team. But what happens when things start to go south? How you know that's where I get a little worried about for KRU here because PRX is going to be one of them teams. भाई डिस्को तो है भाई. Early on. And that's the thing. Like you got to be able to adapt. 50 तोला. वर्साचे का चेन है वो. क्या बात कर रहा सही में? They're going to have a tall order ahead of them. So. भाई ये कितना comfy पोजीशन में खेल रहा है ना ऐसा वेट के खेल रहा है. Here, and what do we end up getting? So you got double duelists on the side of PRX and you get the chamber, but single duelist है यहाँ पे KRU पे. Just as you mentioned, Sean. Yeah, and this is a really good opening chance. Okay, this is the standard comp I've been seeing a lot throughout, you know, VCT. Something on Jet, let's go. Many teams like NRG, for example, yesterday are running this double duelist Astra Viper Sky comp. अपना Sentinel नहीं खेल रहे PRX. Let's see what happens. Same team almost नहीं. एक टीम में Sentinel एक टीम में नहीं है. Many teams play it. With that said, they how old are you? I'm 20. Solid pistols, solid bonuses, insane ult play rounds. Chat आवाज सबका बराबर है क्या एक बारी बताओ. Throughout this game, that KRU is something 11. Let's go. 11 बोले तो? Well, this is it.
time to see how the chips land as we get ready for our first match of the day, and all that's left to do is send it over to your casters. This one's one of my favorite people in the world. We got Doug and Bala on the call. Gentlemen, have fun. Thank you so much, because when I think about these two teams matching up, I'm expecting how you would feel after pounding like 3 cans of Red Bull, a line of G Fuel, and everything else you could possibly fathom. It's going to be fast, it's going to be action-packed, it's going to be full octane Valorant. Absolutely, and I know it's, you know, various times throughout the world for people watching. It could be early, it could be late, but this is something that you wake up for. This is something that you stay up for. Yeah. Be up. One of the most anticipated matches. Exactly, one of the best matches, group stages. Why? Because something's playing on the stage for the first time, because KRU are going on a run currently right now throughout all LCQ. The entire time, it's just so anticipated, and right off the bat, we might get that aggression you were just talking about here on the safe side. Double duelist again. Okay, PRX attack करिए. Finally getting to see the international debut. आवाज बराबर है नहीं ये बताओ. Anticipated player, and of course he's going to be the tip of the spear. Oh, भाई साहब, something. Melser does not see the gift that's in front of him. Once found, the second falls. Everybody full blind for like 5 seconds there. It felt like, thought the server lagged out. Yeah. And what a gift to wake up to, though, right? As soon as the screen comes back, you have 2 players served up on a platter. And an excellent start for KRU. Toxin screen down. The right call for them as well. पीछे देख लेता मेरे भाई थोड़ा सा हैं? दवाई भाई आराम से वॉल के लिए रुको. वॉल के लिए रुको. वॉल अप करो और वेंट चले जाओ भाई साहब. बी पे कोई नहीं है. Oh, Mind Freak भाई आराम से. 65 HP on Mind Freak, 66 on Divine, not much better. Oh, nice shot. Although that may have been enough. अकेला बचा है. Oh, nice one यार दवाई भाई. It's okay. Get the pistol. भाई लाइक नहीं किया कोई तो मतलब to try to shut down PRX. पल्लो भाई without Alice पाव. They can be so aggressive. भाई यार कैसे नहीं देखे यार इसको. फुल ब्लाइंड था ये बंदा. फुल ब्लाइंड था वो 2 सेकंड के लिए. 2 सेकंड नहीं 5 सेकंड. You know, them trying to go quickly out of that despite not getting any. Come on, निकालो भाई. जिंग भाई ने जज निकाली अपनी बकी निकाली है. जिंग भाई निकालो. ओ भाई साहब. He's gonna go right up mid with Forsaken's flash. To show him. Get control of Mel, but no punish. Melser takes his यार साला कोई क्लोज खेला ही नहीं वे. हट यार. Nice nade. Oh nice. Oh shit. He got a little ahead of himself there for just a moment. They could get a plant here though. Smoke कर दो भाई सिटी. Oh extra भाई. Set off the angle just to smoke. Coming back up from Mind Freak might be what they're waiting. अच्छा smoke नहीं है उसके पास. Okay. I don't think he bought an extra star here, so I don't think it's actually coming back up. और they can't smoke it. दवाई को स्मोक करना पड़ेगा अगर उसके पास है तो. दवाई के पास भी स्मोक नहीं है. Oh, the first shot just missed. Yeah. And Kesnet right away. जिंग भाई क्या यार जिंगा भाई हाँ? Person that everybody's saying is undisputed code at Raze right now. Everyone except him. चलो प्लांट तो मिला यहाँ पे इको में. Asked him straight up, "Are you the GOAT?" And he goes, "Nah." पल्लो भाई देखो क्या बोल रहे हैं. I know it's early, but at least in that duel, he was right. Kesnet looking for a second, and of course the second found. कोई बात नहीं. Has no bite to it. Nice inco in the chat. Nice inco. Solid anti-eco. And already you're seeing क्या पी रहे वो the लोग? thing that people were talking about. भाई वो लोग जो पीते हैं और जो हिलाते हैं ना वो चाहिए भाई अपने को. On paper, if you just look at performance, you just look at achievements, any of that. वो कर रही भाई public. PRX is the favorite in this. Yeah, but when you look at play style, you think KRU have a massive chance to have a stylistic difference against PRX, something that people have theorized forever, but barely ever comes to fruition against PRX with their aggression. If you can just weather Alright, अभी देखते हैं PRX कहाँ पे जाती है. PRX slow खेल रही है क्योंकि PRX का full buy है. Succumb to it, then you have chances. Which is much easier said than done, but at least early on, KRU have managed to do just that. क्या स्मोक है रे? अच्छा, रैम स्मोक करने के लिए वो. ओ भाई वो मिस्टर देखो लेफ्ट में आ गया है. माइंड फ्रीक को पता नहीं है वो लेफ्ट में आया है. जिंग जज पे खेल रहा है. In the situation of Guardian in the hands of Davies. Oh भाई, thank God. There you go. Now you know. He gets the satchel out of there to avoid damage. He still took a little bit. Yeah, gets healed back up, but
thing you're mentioning Nagzat with just the स्लो खेल रही है. ओके PRX B के तरफ आती हुई. अभी जिंग के पास सैचल्स है. जिंग के पास एक ही सैचल है अभी. जिंग के पास हेवन पे 2 है, एक साइट है. Oh, that's a nice posy to the. भाई प्लेटफॉर्म चेक नहीं करेंगे. Oh, चेक किए. ओके. Nice entries. I mean, 3 entries for Forsaken as well. Nice. Very nice. Very nice buy. Cleans up both. Okay. Really good anti-bonus there from PRX, and that was controlled, okay? They're not just going for complete antics down mid or anything like that, sending Jing far with this. They took control. पहला राउंड PRX ने B किया, फिर उन लोग ने A किया. फिर ये राउंड उन लोग ने मिड पे हैवी प्रेजेंस दिखाया और फिर रीग्रुप करके वो लोग ने B हिट किया. ओपड़े कॉम्पड़े शॉम्पड़े कर दिया भाई. वेरी नाइस राउंड. क्रैक्स निकले बे एंट्री के टाइम, वो बहुत इंपॉर्टेंट. क्या भी मारता भाई ये. कल बबली जीती, आज KRU जीतेगी. नहीं. Something looking comfortable so far. It looks like he's just going straight for the roll. He's not getting crazy flashy plays. 2 जन B की तरफ है, 3 जन A की तरफ. ओ भाई जिंग भाई. Double satchel up towards ramp. Nobody here to be found. Okay, कोई नहीं है. The timing on that is so pretty, man. The smoke pops just on the other side, or the flash. So is this a fake 2A, guys? क्योंकि स्पाइक जा रहा है B की तरफ. Jumps on top of the box to avoid the spam. The boombot saves a little bit of time. Okay, the spike is back to A. Melser's really wide by himself. That double peek there from Mind Freak and spike अभी भी A पे. Oh, ये Nagzat के पास बहुत info रहेगा. And it's tough to tell that there's going to be 2 swinging there. They know now it's A just because Viper इतना forward आया है. तो इसके वजह से रेज अभी B छोड़ के जा रहा है. 2 जन ऑलरेडी A पे है. Very nice molly यार. अच्छा स्मोक था वो. Oh, nice one Mind Freak. Oh, nice. Nice one. भाई वो लोग निकाल लिए थे almost. Something low था. An incredible round again from PRX and from something specifically. This is why we were excited for this kid. When we see the replay here, I'll point out a few things. The way that he's actually dynamically creating. को मालूम? मेरे को बचपन से लोग something बुलाते. सही में. Allows those kills to be traded no matter what. Using that dash perfectly. And now he's at the top of the scoreboard. Right away has knives too. Crew down to an eco instantly after a और भाई 4 जन क्रू के यहाँ पे मिड पुश कर रहे हैं. सीवर्स पे देखो PRX के 50 जन है. जिंग ने 1 मारा है. जिंग भाई बाहर आते हुए फ्लैश के साथ 1 मारा. माइंड फ्रीक ने 2 मारा. काम 25 क्रू का. क्या बात है. यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इजीली राउंड निकालते हुए PRX 3-2 होने वाला है अभी. And it's a bad play. Yeah. Jing just operates on different rules, man. He really does. परसों तक नेट्स था, कल नाइट बोले थे, आज समथिंग. भाई लेकिन नाइट मेरा फेवरेट प्लेयर है भाई. नया भाई ये क्रू का एस्ट्रा अपने आप को डीमन 1 क्यों समझ रहा है. ये भाई डीमन 1 ने क्या किया था. वे कुछ मैटर किया था क्या उसने. ईबैक किया था क्या. तो पब्लिक कुछ ट्विटर पे लिखी थी. जिंग लुक्स लाइक अ नर्ड फ्रॉम एनीमे. नहीं भाई जिंग भाई मेजर दिखता. Inside of your defense because you're rotating to deal with the rest of it. It's such a tough task. गन नहीं है ना मिड पे. ओ भाई एग्जिट ले रहा. भाई एग्जिट पे अगर आए ना ये लोग मिड पे. माइंड फ्रीक तो लो है. ओ गन मिला भी इसको. Some people like to try to fight fire with fire. गन मिला उसको. Zico was an example of that. वैट्स भाई ये 16mm है 1.4 aperture. How to defend that trademark, the trip that Davies is putting in. Timeout called from Coach Adam immediately here. एडम भाई ने टाइम आउट लिया है यहाँ पे. ठीक है तो तब तक मैं एक चीज करता हूँ. तुम लोग बताओ ये कैसा है. Very electric plays from the star duelist on PRX's squad. Well, अब कैसा लग रहा है. One of like 4 or 5. अब कैसा लग रहा है जल्दी बताइए. But it was a quiet start. अब कैसा लग रहा है जल्दी बताइए. Maybe 0-3 at the beginning, but he's very quickly gotten comfortable.
think he was comfortable from the start, despite that pistol round getting flashed up. Sure. अरे भाई बस क्या यार. I don't know what Thank it you, means, thank but, you. I'm imagining अरे it's really funny. मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ. That was Harsh भाई, you are the best streamer. ये लिखा था. And you know what's crazy? Yeah, tell me अच्छा लग रहा है अभी. Okay. Sure. इतना अच्छा लग रहा है. वे OP कर रहे हो चैट में भाई. Okay. The amount of Kong fans I heard inside this arena waiting for that next game is crazy. That doesn't sound like they've gone anywhere. Right now, we gotta watch this debut from something. This debut from a PRX squad where we haven't seen their full roster since Pacific League. They got third with a sub. Right now, looking for validation on the global stage to see whether that same streak can continue, because it did feel like they were touched by a special. Oh, भाई साहब, Vamos crew. भाई उनके रेस के पास अल्ट आ चुका है. माइंड फ्रीक के पास अल्ट है. जिंग का अल्ट आने वाला है 2 और में. जिंग भाई अल्ट लो और भाई साहब दिखा दो हमको मोन्टाज. जिंग भाई यहाँ पे आराम से बीमेन जा रहे हैं. बीमेन का विषय कर रहे हैं. अकेला वाइपर लर्क कर रहा है ए पे. शायद एस्ट्रा राइट साइड अल्ट करने वाला है. एंट्री. ओ भाई अल्ट किया ये. व्हाट अ पुल, व्हाट अ पुल. अरे शिट. नाइस. लेकिन लो है फॉर सेकंड. दवाई कहाँ पे है? दवाई मिड से आ रहा है. ही इज एक्सपेक्टिंग दवाई. नहीं यार दवाई. 30 HP. 1v2. It's gonna have to be all 5 if he wants to pull this off. Gotta grab Spike here. नहीं, they are peeking, bro. They are peeking. No, I don't think so either. But he only has 5 bullets. I think it might have all of a sudden. You see both the players on the minimap falling off. अबे यार ये क्या 2 बार सोचते यार ये लोग क्यों? He doesn't have a flash. They're going sewers. Oh my goodness. 30 seconds. Anyone makes a step, they're gonna hear it. They're gonna hear him. For yeah, sure. Surely they hear that. It's a weird position though, because do you have the timing to go up the rope and set up a nice crossfire against him, or are you just wait? No, you're gonna ISO the fights. That's okay, because Forsaken. Hey yo, chill out, bro. Really well played there from. भाई public hard है आज. Public hard है आज. So curious whether that dog spotted him fall back into B main with the spike there. See if we get another look at it again. This was such a good hold from. ISO क्यों बढ़ाना? Exposure बढ़ाना है क्या? ISO बराबर है. Forcing only Jing and something to be. Everything's perfect है. मेरे को और कुछ करने की जरूरत. हाँ अभी perfect रहेगा शायद. यार एंट्री के टाइम पे थोड़ा सा RIP हो गया यार. Instantly on that quiet round. Public hard है बोले तो अरे. ठीक है अमन. Crowd hard है. That's a mid ult. जिनके पास ult आ जाएगा अभी. आज लफड़े होंगे वही भाई. That's good because it shuts down. Thank you Trimax, keep supporting. हाँ क्या अग्रीजीत मैं देखता हूँ. Agreed, sorry. कौन सी टीम का है वो Demon 1? ये something ने ऑप निकाला है. Here we go, something going for a peek here against Kesnet. Just jiggles coming up. Defensive dog आते हुए मस्त तोड़ दिया है, so no one knows he is opping. That's a wall by दवाई, so that Rams जा पाए, लेकिन जिंग नहीं मान रहा. ओ भाई वो नेट से 2 मारा. I mean नेट से 1 मारा. Oh, 4 second dog कर रहा था इसलिए वो मर गया. Oh, such a nice entry. 3v4 है दोस्तों. Reposition something onto trying to get an entry back on the side. Yeah, he has to actually give up the Heaven push कर रहे देखो ये लोग. So you can dash instead. He doesn't even have it though. Nah, bhai, this is going wrong, bhai. This is going wrong. This is going wrong. You're right, it's not fast, and you're right. Crew have taken so much space down ramps, and I don't think PRX are aware. The first one's a little bit sloppy, but the second comes through. Crew with 3, something left alone. I got the spike. Them Crew banner boys roll T. That's one on the PRX, so a few seconds left in a 1v3 something. This would be quite the expert ratio कर दिया मतलब. He can't pull it off this time. अच्छा Twitter पर. Twitter बोलना X क्या है? 2 rounds in a row where the reclear is phenomenal. That last one was a very different situation. Here Crew had the advantage. They already shut down the A main push. भाई क्या एंट्री लिया था यार जिंग ने, लेकिन ओ अच्छा पुल था ये. Wow, what a pull.
but then walking back down ramp is perfect. That's one thing that's a tendency from PRX is X है अब, लेकिन X कौन बोलता है भाई? They tried it. Full send Okay, B-man push कर रहे हैं यहाँ पे PRX. A-man push कर रहे हैं और A पे ऑप है. Something with Blades though, and the flash up top. How do you handle both? He can't. He's got to get away. The showstopper used. So much space lost in heaven already. And look at him. The tandem trying to find space. The blades don't land. Actually, neither does. What the hell? Down. Jinx still with the judge. Oh, nice Jinx. अरे यार इतना नहीं भाई. 2v2. Nice. 2v1. And it leaves Melser by himself. लेकिन लो है दोनों अपने. Forsaken on the plant. He's healthy. They are pushing elbow. They both are pushing elbow. Plenty of time to. They both are pushing elbow. Play this one methodically, carefully, but is he expecting? अरे अभी पीछे गए वो लोग. What are they doing? Now they've segmented the stun. Oh, nice. First, nothing connected and Forsaken takes भाई care ये of टफ था राउंड यार, माँ कसम. अबे अटक क्यों गया ये? भाई टफ था राउंड, माँ कसम. You saw him go in the astral form a couple भाई times. एंट्री ली वो जो एंट्री ली 4 सेकंड ने, जो हवे में उड़ के नाइफ चलाया, वो नाइफ कनेक्ट ही नहीं हुआ है. सीटी से आई मीन स्क्रीन से स्काई बाहर आके जिंग को भी मारा और समथिंग को भी मारा. माँ कसम, मैं बोला उधर ही खत्म है गेम. लेकिन किसने तो पॉप ऑफ किया. अच्छा 4 सेकंड ने या माइंड फ्रीक ने? भाई साहब 4 सेकंड के पास ऑफ है अभी. ओके It's actually Forsaken. They're gonna go for a fast A hit because of this. Something's gonna dash on, and that's why he's giving up the op. Jink can double satchel with it too. That's a nice nade. Drops a pop shot, just a warning to let him know what's in play. There it is, right into his face, and the shorty drops him. 73 HP, and he's going in for more. A second, perhaps a third. Something finds it. नशा भाई, इसे बोलते हैं नशीला. W Gaming. Beginning to end. Prime Gaming flawless comes through. And it forces भाई साहब, W Gaming OP in the chat. Look at this. He has a Vandal, and he's dashing in to the chamber where he knows he just missed an op shot. And he knows he's not going to be quick to adjust onto it. Just such a good play. And then you saw the rest of it. I think this guy's the real deal, guys. I think something absolutely is the real deal right now. ऑप निकाल रहा है वो. अच्छा अल्ट में. Unfazed. On the big stage, Davies with the ult and something with the kill. Something OP. All of this anticipation about something what kind of OP. he would be. भाई साहब नशीला गेम प्ले. खत्म है अभी, खत्म है भाई, अभी खत्म है. खत्म है. And Kesnet had no idea, because why would you expect something like that? Oh, भाई पागल हो गए ये लोग. In the moments where I just feel bad for the observers. ये क्या कर रहे हैं लोग? Through Ivy. क्या कर रहा भाई ये? वो देखो नाच रहा. Look at him, he's just jumping in the background. Yeah. Bro, when क्या कर रहे this भाई? pace, when it's this high octane. This is what we love about PRX. Yeah. It's just such a different variety, a different flavor of Valorant. डेंजर है भाई ये लोग. But it's good. चलो हाफ टाइम स्कोर बताओ. अभी 5-5 हो गया है. क्या 7-5 होगा? 6-6 होएगा. I mean, we might fall into the doldrums here of just chaos, but you saw it in the beginning of this. 8-4 7-5 6-6 क्या होएगा चैट? 8-4 7-5 या 6-6? भाई क्या मारा है यार. भाई इसका मूवमेंट्स दिखाया नहीं बे उन्होंने, जब डबल सैचल करके जो ऊपर गया है वो. Just crazy. And you're starting to see it on the faces of the crew players. 6-6 होने वाला है हाफ. 8-4 नहीं 6-6 होगा. A little bit of despair. समथिंग के पास अभी भी ऑफ है. रेस का अल्ट आ चुका है. डिफेंसिव रेस का अल्ट आ चुका है. वो अभी देखो इस पे है, टावर पे है, ए पे. He's gonna ult now. Maybe not. अगर वो लोग पुश करेंगे तो. It's just suffocating. You know, we talk about teams who have the approach of रेस अल्ट करने के लिए फुल रेडी है मालूम. Oh, they faked the ult on B. That's a very nice ult. Normally you get this double dive through and there's no double dive. लेकिन ये इन्फो मिल गया. They're holding pretty. This fake did nothing. नहीं ये इन्फो मिल गया यार. Is going to segment them off for just a little bit. That race will ult tower now. In rafters. Crazy part is, yeah, sure, the fake Yeah, he did did. nothing, but they still have all of this. घर पे अल्ट भाई, घर पे. For themselves to make and execute happen on the safe side, and we've seen them barrel through many times already. Hasn't invested the ult. There's something with blades, and he's got. वो अल्ट किया लेकिन नहीं लगा भाई.
What's the cue for them to go off of the flash? He tries to get him high, tries to find some space, and he finds Melzer with it. Jane repositioning, down in hell, finding another kill. वो देखो सीडी पुश किया देख. I mean, they do so भाई well जिंग hitting him पागल है भाई. That would have been filth. Now they've invested the pit. Now they're gonna have to get through. अल्ट करते भाई, मुंह पे अल्ट करते. 1v3. He's gonna have to do so much वो work. दिखाओ उसको उसका पिक्सल भाई. But well handled by Divide. Reposition. You hear the shot. A fake. Nothing but a ruse to suggest it may have dropped down, but he's still up on high. Oh, again another fake too. These little sound cues are perfect against PRX. They love to peek off of them. So I'm surprised the discipline from both players right now. They haven't moved an inch. And Davies is running out of time. The bait was never taken. ओ भाई 7-4 हो गया. डुएबल था चेंबर के लिए. अगर वो वाइपर को मार देता दवाई को जब वो स्पॉट किया था, अगर उसका कनेक्ट होता ना तो भाई विनेबल था. भाई सॉप क्या खेल रही आरडब्ल्यू करके, मां कसम. नशे हो रहे, नशे हो रहे भाई, नशे. We've only got one more round, so let's take a look. Ting was, I mean, these shots that he's hitting, diving into the smoke again. And yeah, I mean, we're going to have to rely on watching. There's no way you expect Jing to continue to W key there. No. It's stuck down. Well, and it reminds me of the frustration that we saw in Kesnit's face, because that's the second time he's been on the receiving end of something like that. Yep. Where someone's satcheling up into a smoke that you wouldn't expect with a Bucky or a Shorty or a Judge or, you know, whatever it is. यार इस ट्रॉफी लेके आएंगी. Let's go भाई, let's go. Double satchel coming in again here from. Oh, Jing एंट्री कर रहा है डायरेक्ट अल्ट के साथ. Well, and you're about to see it again. There's the satchel, there's the flash. अरे अटक गया बे. शायद वो पुल के वजह से भी हो गया रहेगा. But he's not going to be able to get out with it the same That's way. nice. Yeah, but even just having that active is pressure. All the crew players have fallen off. Well, and I think उनके पास रीटेक के लिए क्लॉज का अल्ट है, स्काई का अल्ट है. Adds an additional threat. Look at how लास्ट राउंड दोस्तों, लास्ट राउंड. भाई वो पुश कर दिया सीडी. मर गया. The plan has already gone down though. Oh, ये आ सकते राउंड. Second on the nade. But you see the Seekers invested for them to try to take the space back. It's going to have to be Jing and Divide by themselves. Jing with 2, Divide in a 1v3. अकेला दवाई बचा है 1v3. Once again, the 1v2. possibility that they दोनों don't सिटी. know. It's not his plan. Now position given away. That's a bad molly. Element of surprise lost. Those 2 mollies intended to cut off any approach. Davies from trying to find some space down low. He's dropped No down. way, no way he Davies gets this. He's going to have to get half. He's going to stick it. He's going to try to stick. No, he pulls off and Divide! Divide with 3. PRX with 8 in the Red Bull clutch. Go dead gamer. So many people were calling this guy underrated. He's falling midair. Oh my. Look at this. Bro, I mean, the worst timing ever for Klaus. how can they lose this? There, but look at this. Bro, how can they lose this? You Why? really expect him to be creeping out there, I guess, from Melzer. I'm not quite sure what the idea there was, but it nets him a 1v3, and PRX with a huge lead on that attack side. How can they lose this? Why? The Red Bull clutch comes through. Just a few minutes left before we get into the second half. Limo. Appreciate it, fellas. And it Appreciate started fellas. off great for crew, and then things started to भाई slowly इसका fall watch क्या apart. दिख रहा है And भाई? PRX realized, oh wait, we're very good at this. ये रेस का जो नेड है ना, ये वो खाता है. क्यों पूछो? ताकि वो खाने के बाद पेट में एक्सप्लोजन होता है ना फिर. ये माँ कसम, इस भाई के तो ये डेस्क पे देखो क्या क्या है. किलजॉय का स्वॉर्म ग्रेनेड है, डैगर है और गेको का पॉकीमोन है. माँ कसम. चेंबर आयन कंफर्म्ड. अग्रित भाई को बिठाओ भाई उधर. अग्रित भाई को बिठाओ यार. क्या कर रहे हो? और लाइक कर रहा है कोई? चलो लाइक चेक करते. लाइक चेक फट में लाइक चेक. चलो लाइक चेक कर. PRX's way. I mean, the chamber locking down the B site, that's how they won the pistol. They were able to stack the A site. And, you know, PRX didn't ever... दवाई प्राउड हर्ष खेल रहा है स्टूडेंट ना. दवाई ने कभी वो सिचुएशन खेला नहीं रहेगा जिसमें डिफॉल्ट प्लांट है और वो हेवन से मॉली कर रहा है. क्योंकि उसने वो जो मॉलीज किए थे वो बहुत ईजी टू डू है डिफॉल्ट पे. लेकिन वो मॉली जैसे उसने एम किया, मेरे को समझ गया ये लैंड नहीं करेगा क्योंकि वो बोर्ड पे अटक जाता है. उसने इतना खेला नहीं है. आई फील वो वाला पोजीशन यार खेला रहेगा ऑब्वियसली. या तो मे बी वो स्टेज पे उनको याद नहीं आ रहा रहेगा, है ना. ऐसा भी हो सकता है.
क्योंकि वो बहुत इजी टू, मतलब मेरे जैसा नल्ला पाव अगर वो चीज पे ध्यान दे सकता है तो मे बी वो यही रहेगा। अच्छा भाई बिजोली गर्जे गाना गा दो। बिजोली गर्जे कौन सा गाना है? Thank you so much, fellas, jumping right. उसने सिटी ब्लॉक करने के लिए किया होगा, क्या मालूम भाई, तो वो बहुत बिग ब्रेन रहेगा भाई वो। ऑलराइट, देखते हैं अभी डिफेंस कैसा करते हैं PRX। लेट्स गो बॉयज। भाई साहब 3 जन घुस रहे हैं इन पे, लेकिन साउंड नहीं है कुछ, वो लोग साउंड के लिए रुके हैं। नहीं RIP हो गया। That's a nice nade. भाई कोई तो मर रहा है। हाँ ये क्लॉज मर रहा है, देखो 4v3, 3 जन बचे हैं PRX के, अभी भी क्लोज खेल रहे भाई। वो सेकंड को सुनाई दिया, वो लोग पीछे जा रहे हैं। वो सेकंड नाउ gonna clear everything. He knows no one say now. Perfect. How is he finding the timing to follow them here through spawn? It's just outrageous. It's lucky. They could just be right there. Yeah, that's not lucky, bhai. That's decision making right there. I mean, he has the lead on the fact that it's going towards B right now. Yeah, they've got. They are going from mid. They know where they are. No. Oh. He's not jumping up the frog. He wants to take the fight. अभी 2 जन लो है ना इनके। नहीं ये हील कर रहा है। Go back through mid. अदिल को A again, cause उनको पता है B पे सब है। They are hitting B. Mind Freak दिखा दे भाई। Mind Freak का 1v4 आ रहा है, देखो 1v4 by Mind Freak। Smoke back लेने वाला ये। Klaus is weak. It's just a classic. Davies is the first to spot, and Kessin is the one who gets the kill. A 3K on the round for him as Crew get another pistol. And again, just like what Sean was talking about the pistol on the desk at halftime there. It's a great idea from Crew, but one that PRX, I mean, they just can choose not to do that again, essentially. कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, होता है। Crew is going to have to start bringing up the pace themselves. भाई क्या मस्त खेली मालूम Crew, उन लोगों ने रीड किया अबे। It was real out there. जो नेड गया है ना वो स्काई को अर्ली राउंड 12 HP करने के लिए, वो टीम नेड था, उनका। Oh my god. Much like the previous half, PRX just investing a bucky after losing the pistol. रश कर रहे हैं यहाँ पे Crew। Going into this idea of getting a judge in the anti-bonus. जिंग के पास बस बकी है, लेकिन जिंग मिड खेल रहा है, बी हेवन खेल रहा है। But they just walked in with the smoke. Oh no. Oh nice. अरे यार। बकी से 1 मिला। 3v4. That's a random grab ball flash combination that they're trying to get value out of. वापस बेचारा बचते हुए। कोई बात नहीं Mind Freak भाई, कोई बात नहीं। And that's a round for Crew. So they're hanging around. Cheer का नाम exclamation chair in the chat. Via the following rounds. They're staying in this game. Absolutely. Okay, अभी बाय PRX का दोस्तों देखते हैं अभी क्या विषय होता है। विषय खोल होता है कि पृथ्वी गोल होता है, चलो देखते हैं अभी। Absolutely far and away ahead of Crew, but it's not the case. I mean, it felt that way a lot of times. These pistols make the difference. It's very rare you see teams win both pistols and end up losing the game overall. It happens, but भाई क्या मस्त लग रहा है ये कैमरा। ओ भाई साहब समथिंग यहाँ पे फुल वाइड स्विंग करते हो। Real aggressive. He's got the dash procced. And I don't know that इसने सुन लिया क्या भाई उसको? हाँ सुन तो लिया है इसने। ये उसका स्मोक मेजर है यार वो। What do they do off this? I wonder if there's movement nice off of that one. flash. But Forsaken just got probably the easiest kill of his life. Yeah, and that's what I was talking about earlier. They love Oh, nice one. What a double peek, bhai. What a double peek. Insane. अरे झिंगा भाई, झिंगा बना दो इसका, झिंगा बना दो। स्मोक में आया है, झिंगा बना दो इसका। In the smoke, I mean, Jing has the advantage, but yeah, Davies has a phantom. There's no way you win a phantom fight. Oh my gosh. Never mind. लकी भाई 1 HP है ये Davies। कहाँ जा रहे हैं ये लोग, कहाँ जा रहे हैं? भाई इसको रैम्स मिल गया है एक को। स्पाइक बीमेन पे है, एक बंदा ए पे है, एक बंदा मिड पे है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। फ्लैश आया, फ्लैश में ये ब्लाइंड हो गया। It's tough to take the site with this against an anchor. Yeah. So Mel's are seeing that, might make the call to go over, but they're also working the map on 3 sides. This is, I mean, भाई Mind Freak देख लेगा इसको मालूम इजीली। You got to be careful here. Oh, Chamber को heaven कितना easily मिला है। Weaponry in this situation, given this is the 3rd round of the half, but they have 3 rifles. भाई Chamber CT जा रहा है, something expect तो कर रहा है उसको लेकिन। Done deal.
by any means, but Mindfreak's positioning along with some things could be the difference maker. The first falls, not expecting Davies up top. Easy kill to Mindfreak. Aure maa. This is well handled. Mindfreak ne to mara usko. 10 seconds left. The Nice. Good round. Good round. Up, and that's the danger, right? If one piece falls, then all of a sudden you're losing so much in the rest of the round. And इनका पिंग 1 आता होगा लाइन में नहीं 0. लकी नहीं है भाई, वो लोग ग्राइंड किए उसके लिए. And he stairs push and then he spawn push through A heaven. Because of the man. भाई ये डबल पिक बहुत इंपॉर्टेंट था भाई. That re-clear through B main, it's something that KRU had some success with in that first half on defense. क्या बात कर रहे हैं, सही में तले पे दी भाई. Really pounce on advantages like that. Same, always a 1-3-1 or 4-1. भी पुश करते हुए यहाँ पे KRU. भाई KRU काफी स्लो खेल रही है ना बे कंपैरेटिवली. Yeah, that's so cheeky. ए भाई ये क्या स्टार है? A little bit to obscure vision just to conceal what's happening, but he repositions, puts that smoke. भाई क्या स्टार था बे वो? No, he stays. अच्छा so that उनको वो दिखे ना. भाई क्या स्टार था वो? So that वो छुप जाए वो स्टार में. There's no help here. There's no flash. The dog spots him. He gets the first, trying to get the second. भाई ये क्रैक्ड है भाई बंदा. A lot of damage done. That's going to get healed back up. Blinded. Something almost got extra value there. Instead, just goes 1 for 1, which isn't that great. No, he was set up for a Reddit moment though, wasn't he? मिड पे 2 जन, 1 सीवर. ओके 3 जन मिड पे. They are trying mid now, I guess. PRX ने बी छोड़ दिया है पूरा. They are focusing on mid. And we're seeing actually with that info that Forsaken got on Davies being the guy B main, he's worked at. अल्स तो किसी का नहीं आ रहा है. 2 जन हेवन पे. They are expecting it good. जिंग भाई के पास जज है. जिंग भाई. Really happy to have this position bolstered. He's also got the nade. He's got the satchels. That's the first dead. He's swinging around looking for the second and finds it. The third falls too. Like dominoes at the legs, at the feet of Jing. They crumble. Lemon. Down the entire show. भाई जज ओपी भाई. जज आज से मेरा फेवरेट गन. अगले पैच में दोस्तों जज जो है ये नर्फ होने वाली है. जज नर्फ होने वाली है अगले राउंड में. Those rough pistols that they've had. यो भाई कल. Feels like those pistols were the most gambly we've seen out of PRX so far. Yeah, sure. पिन्नेकल का मतलब क्या होता है स्टॉर्म भाई? But in terms of initial round idea. लेकिन बात तो सही कही है आपने. We still don't really know. I mean, all we know is that they're sharing the IGL responsibility among all of them. भाई ये नर्फ आ रहा है इसका. इसका नर्फ आ रहा है भाई. भाई इम्पॉसिबल है इसके साथ फाइट करना भाई जज के अगेंस्ट. It's crazy that they're able to make such good calls. ये ना भाई क्या चिल है वो बंदा भाई क्या चिल है. भाई बहुत टिल्टिंग है भाई जज से मरना. Most of the time we've heard it's Forsaken IGL. Yeah. ओके अभी जिंग के पास अल्ट आ रहा है. ओह माय गॉड दैट्स अ नाइस पीक. ओह व्हाट ये क्या पीक से देखो चैट. लेकिन पहले तो डॉग आएगा ना अभी. है भाई उनका पीओवी दिखाओ भाई उनका पीओवी दिखाओ. The man is aware. The man knows that flash. I didn't think he got any info, but it may have. He turns the flash. अरे माइंडफ्रीक मर गया वे. That's how you deal with it. Yeah. अच्छा माइंडफ्रीक ने पुल किया और वो पुल के एनिमेशन में वो अटक गया. I mean मर गया. इकोनॉमी का मतलब क्या है पैसा. Does he pop the blades and go? No. Come on, man. Do it for the people. He gets Davies, takes a step back. Evens it back out. वापस हिट कर रहे हैं ये लोग. इन लोग को बीच आने का है. तो भाई सॉरी. Oh, dude. Traded though. Well handled. Forsaken. कैसे मारा रे समथिंग ने उसको? Because again, a second kill with the sheriff 2v2. Oh my god, 2v2 आ गया अबे. इनके पास गन्स आ जाएंगे अभी. समथिंग ने वन टैप किया उसको और वो खुद मर गया बाद में. There's still so much. कुछ तो मचांड हुआ मेजर. This is an eco round too, remember? Right by, just sheriffs out. And they've got themselves a great position. उसको इन्फो आ गया. Lurk from Nax, he doesn't know what's in sight. The thing is, they're not going to be able to upgrade any of these weapons. इसको हटा नहीं They're दे. going to go towards A where none of the action is taking place. Yeah, bodies are littered towards B, and that's where PRX are, but there's not going to be any advantage found. 10 seconds left. KRU will manage to get the spike down, and now they're going to have to deal with this fight that's impending. Are they both going to double up and spawn? Something looks like Emiliano Martinez नहीं वे जरा भी नहीं. Oh, he has 2 mollies. He can delay for quite a while actually. Oh भाई ये लोग निकाल रहे राउंड. नहीं ये वो लोग पीक क्यों किए ये? वो लोग पीक क्यों किए ये?
I don't know भाई वो लोग का क्या दिमाग में चला रहेगा. Man, that does look good, doesn't it? It sounds good. Yeah. I was just listening and not gonna lie, bobbing my head. टिशू भाई क्या कर सकते हैं अभी बताओ? कुछ कर नहीं सकते उसका. Given that the Molly was cutting off, I guess they thought maybe he's going to push it. It's a more advantageous fight given they may be vulnerable, taking a little bit of damage, but yeah, here it is, Jing. I need something. Oof. भाई क्या चापती दिया है भाई. Oh my god, that was insane. That was insane, भाई. Attempted eco. Yeah. From KRU. You're right. You were surprised that they push out. I think it's because that was insane shot. ऐसा अगर मैं मरूंगा ना भाई, अगर मैं ऐसा मैं मरूंगा ना भाई, मैं उसी दिन गेम अनइंस्टॉल कर दूंगा भाई. ये ऐसा कौन मारता है भाई ये सब हैं? कुछ भी मारा है भाई. Okay, there's a guy there. Let's keep our guns out, you know? Sure. And I think that makes a lot of sense. My question was after the mollies dropped, the swing comes. full time score क्या लगता है? भाई 11-6 है. उन लोगों ने 1-2 राउंड ही जीते ना सिर्फ हाफ के बाद. मैं बताऊं फुल टाइम स्कोर क्या है? 13-9 फुल टाइम स्कोर है. अभी क्लोजिंग करने नहीं आएगा PRX को इतना इजीली. क्रू का ये टाइम आउट है तो वो लोग आई गेस वो लोग राउंड जीतेंगे, बट 13-9 फुल टाइम होएगा आई फील. That's going to be tough too because you hear the PRX fans come to life. भाई 4 सेकंड और जिंग के पास अल्ट है. ये राउंड भी ये PRX का हो सकता है बे. जिंग देखो रैम्स पे खेल रहा है और ये लोग यही जा रहे हैं. इमेजिन अब जिंग बोलता है भाई तेल लगाने के बाद मैं अल्ट कर रहा हूँ. नहीं उसको नहीं मिलेंगे किल्स, वो लोग डिफॉल्ट खेल रहे हैं. लेकिन समथिंग पहले राउंड जैसा पुश कर रहा है. ओह ओके समथिंग. Let's get to that later, but yeah, something is good on that. Something as a judge. It's been Jing this whole time. Here. You've got a nade set up from Jing once there's contact. Maybe a molly, but no flash, nothing like that. टाइम आउट में क्या होता है? कोच उनके कोच बताता है कि कोच ने क्या एनालाइज किया है कि कौन क्या गलती कर रहा है. कोच बताता है. Oh my god, such a nice crossfire भाई. और अगर कुछ भी वर्कआउट नहीं करता तो जिंग का अल्ट है. Oh my god, they got mid free. Bro, they got mid free. मैंने देखा ही नहीं. Oh my god. That wasn't good. That wasn't good. No way B जा रहे. Okay नहीं, B नहीं जा रहे. What do you do? How do you decide to end this round? It's a 2v5. It should be easy. But with the amount of time that they're spending right now, it might be difficult. Bro, imagine अभी spike down हो जाता है MN पे 4 seconds से. You've got the cosmic divide back there. Mind Freak makes his way through, so they've gotten up. नहीं यार. What? That's great from Davies. Just it's massive knowing exactly what the win condition is, getting that spike in. He holds the line. Happy birthday, Purvesh bhai. May God bless you with happiness and lots of love. Take care. Happy birthday, bhai. Vandal सबसे अच्छी प्राइम है. Still should be a decent amount of money for PRX. भाई 7-11 हो गया. Stays alive, a 3K for Davies and a prime gaming flawless for KRU to stay in this fight. जिंग के पास अभी भी अल्ट है. 4 सेकंड के पास भी अभी भी अल्ट है. भाई ऐसा मिड नहीं देना चाहिए बे. मिड उनको फ्री कैसे मिल गया? मैं देखा नहीं अच्छे से. Dodging the boom bot that came through early from Jing that set up something on the angle and then starting to take the space. That's how you fight against this team. Give little information. Listen to what भाई मैटर कर दिया भाई ये डेविस ने. मैटर कर दिया डेविस ने. And then work into them now that you know. That's really nicely done. भाई इन लोग ने अभी इन गेम वो जो चिल्लाते वो बंद करके रखा है शायद. Where the little run gets put on from PRX and बेचारा डॉज किया, उसके मुंह के सामने फ्लैश हुआ है. expanded between the two of them. ओके ये भी डिफॉल्ट खेल रहे हैं लोग. जिंग और 4 सेकंड के पास अल्ट है. डेविस अभी भी ऑप कर रहा है ए पे एकदम पेशेंटली. समथिंग भाई बहुत फॉरवर्ड आ चुके हैं बी पे. समथिंग अभी भी जज कर रहा है दोस्तों बी पे क्लोज. देखो शायद बी हिट करने का दिमाग है इनका. मिड हैवी खेल रही है ये बार PRX. And I mean that's a nice ult by 4 seconds. 4 seconds ने ult किया है यहाँ पे to check. Check a smoke. You can't do anything like that. Something has invested the blades.
Okay, no one has left anything. किसी ने भी हिला कोई भी हिला नहीं, right? 4 सेकंड की फ्लैश से समझ जाएगा अभी ए पे कोई नहीं है. Nice. Oh, nice one by 2v3. Spike down harmlessly on the ground, instantly scoop back up, and guess what? Something का game है भाई, something का game है. Right into that judge. A possibility to end the round as he goes up top, not able to get the second. Davies left alone. 70 HP है. Another clutch situation potential for KRU. Nice. Tries to control the spray. Good round, good round, good round, good round, good round. भाई साहब, भाई मिड पे वो क्या कितना इंपॉर्टेंट किल लिया वे. भाई मिड पे 3 जन थे और वेंट से वो फिर भी अकेले को पिक ऑफ कर लिया. ये देखो दवाई. शायद एस्ट्रा नाइफ आउट था. एस्ट्रा नाइफ आउट था क्या? Again, execution could be a little quicker, but this is what happens when you play against PRX. You start to get scared, you start to play much slower than you normally would. You hear the tour de force was used in the pit shortly after. Try to keep an eye on what's in play in this round. Nagzet has his ult as well. भाई that's a nice ult at mid by the way. Some info of what's on the other side. फिर भी mid पे 2 जन खेलने ही पड़ेंगे obviously. ए की तरफ स्पाइक जा रहा है. अभी कुछ अल्ट्स नहीं है. दवाई का अल्ट है जो यूज किया है और पर बी के बाहर होल्ड कर रहा है जहाँ पे एक वाइपर है सिर्फ. बट ये दे आर प्लानिंग टू गो ए, तो ऑप का कोई मतलब नहीं है. सिर्फ 2 जन साइड पे जिंग और 4 सेकंड. देखते क्या करते ये लोग. With all this group up towards A and something with the deep line on B. They've got information right now. They've got damage too from Forsaken spamming. I mean, even the pit mid, they know. Look, heaven से out आ रहे. Oh my god. Oh, that flash got a little silly up there by Forsaken. अरे timing यार. Mark and Davies finds his out on. नहीं. Shortly close. Forsaken, what a flick, what a snap. An attempt at the second. It's prolonged, but it's fouled. Bro, he's so good. Able to find the third at 3v3 now. 3v3. The attack side pit. भाई 4 सेकंड जिंदा कैसे था? Yeah, great thing here though is PRX has immediately confirmed that all 3 players are within that pit. Based off of the flank coming through. It's the only one out there. Imagine he connects one. For something to pick up. No, he's just gonna go with the shorty. Dude. I mean, just so many warning shots. And no way. GG, bhai. What a quick turn. What a round for PRX. They take split 13-7. Oh bhai, how they won this one. GG, bhai. Incredibly decisive game. But again, by shorty. On his first global match, his debut. भाई shorty और judge खत्म कर रहा है भाई. Legit 4 सेकंड की वजह से ये राउंड निकला है भाई. No cap. Core. PRX stepping up as well. भाई insane game भाई, insane. Game on split. The one thing that I have to mention too is we're going to Pearl next. KRU was. क्या ये 2-0 होगा या 2-1 होगा? मेरे को अभी के हिसाब से ऐसे लग रहा है कि अगले मैप पे KRU कमबैक करने वाला है. जिस हिसाब से वो लोग थोड़ा पोटेंशियल अपना दिखाए थे उस हिसाब से भाई बता नहीं सकते यार. कल बिली माँ कसम 2-0 कर दी यार. डेंजर सीन है भाई, डेंजर सीन है यार. मजा तो आ रहा है लेकिन कुछ भी होगा मजा तो आ रहा है. भाई गेमिंग टेबल है भाई का, गेमिंग टेबल. और यहाँ पे जोकू भाई लगे ले. क्या बात है. गेमिंग टेबल. मेरे को भी गेमिंग टेबल चाहिए भाई. एक एक्चुअली है मेरे पास अभी जो टेबल है वो गेमिंग ही चाहिए मेरा, क्योंकि उसको हमने काट छाट के डाले है. ओके, रैंक इन डिस्क्रिप्शन इज ओके. Thank you, Titan. Spike down A. जिस हिसाब से स्प्रे ट्रांसफर किया है, सिल्वर या गोल्ड, शायद गोल्ड है.
नाइट मांगेगा क्या सीन कल होएगा ना। हेलो अभी फ्लैट नहीं है ये, फ्लैट नहीं है 110% ये फ्लैट नहीं है। फ्लैट या गोल्ड है, सॉरी सिल्वर या गोल्ड है। आई विल गो विद गोल्ड वन, आई विल गो विद गोल्ड वन। फ्लैट नहीं है ये, फ्लैट नहीं है, फ्लैट हो ही नहीं सकता ये, फ्लैट हो ही नहीं सकता। ये सिल्वर बी या गोल्ड वन। Horse boy will be proud of me. Okay, okay, okay. Okay, अभी अच्छे से रीड करते हैं, अभी अच्छे से रीड करते हैं, अभी टाइम लेके रीड करते हैं। रुको पोर्टल के इधर इट ओपन्स टिल अप टिल 5। हां उसके लिए बी आना पड़ेगा ना मेरे को, अभी मैं ए पे हूं ना। भाई वाइपर सिखा रहा है उसको, हैं? आई कैन ट्राई दिस वन क्योंकि पूरा साइट ही हो जाएगा बिकॉज़ बराबर है, बराबर समझ गया, समझ गया। स्मोक और हियर वन वे। ए लेट्स गो भाई, जिस हिसाब प्यार से जो ए भाई आराम से जितने प्यार से बाय किया है ना भाई ने। भाई इतने प्यार से उसने जो बाय किया है ना, उस कैलकुलेशन के हिसाब से ही कांट बी डायमंड असेंडेंट और इमॉर्टल। ओके ही विल बी, लेकिन बकी काफी अच्छी चलाई भाई ने, बट ही वाज सो कंफ्यूज व्हाइल डूइंग दिस वॉल। टेल्स मी दैट कि ये एक ओकेजनल वाइपर प्लेयर है एंड ही वॉचेस मी फॉर श्योर। तो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस कैलकुलेशन है सिल्वर 3, आई गो विद सिल्वर 3। मेरे को गोल्ड सा लग रहा है ये, बट आई गो विद सिल्वर 3। तुम लोग क्या बोलते हो? गोल्ड बोल रहे हो? सिल्वर गोल्ड, गोल्ड सिल्वर 1, आई गो विद सिल्वर 3, आई गो विद सिल्वर 3। ये तो सिल्वर लॉबीज पे भी होता है क्या? ये रेडियंट लॉबीज और इमॉर्टल लॉबीज में भी मैं करता हूँ। भाई बेकी व्हेन यू कैन बाय जज, पता नहीं भाई उसका होगा कुछ कैलकुलेशन। 3 2 1 सिल्वर 3। कैसे बे तू इतना 1 घंटा क्यों लगाया तूने बाय करने के लिए भाई? दैट वाज सो मतलब अजीब था भाई, वो ऐसा लग रहा था भाई स्टीयरिंग व्हील से बाय कर रहा है। अब यार आज रैंकेस क्यों नहीं हो रहा मेरे से? यो हगा से तू ये चेक करके बंद कर, क्या उसे कहते हैं, बताना बंद कर। भाई गैराज ये कल देखे थे ना अपन ने, शायद ये कल देखा था मैंने, ये कल देखा था। ये बहुत गंदा लैग हो रहा है भाई, ये बहुत गंदा लैग हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। Ascendant, ascendant, straight up ascendant, straight up ascendant, straight up ascendant। भाई ये लोग कैसे रे इतना लो रैंक मतलब इतना अच्छा जेट और रेना खेल के ये लोग ऐसा लो रैंक पे कैसे? भाई अब तक इमॉर्टल पहुंचना चाहिए अगर ऐसा एम है तो। इसका मतलब समझते हो, इन लोग को एक अच्छा सपोर्ट प्लेयर नहीं मिलता, को अच्छा कंट्रोलर नहीं मिलता, समझ रहे हो? इसलिए एक अगर तुम एक अच्छा कंट्रोलर या आप सपोर्ट प्लेयर हो ना, आप रैंक अप आसानी से और अच्छे से कर पाओगे। या तो आपको एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डुअलिस्ट बनना पड़ेगा, या तो आपको ओपी कंट्रोलर बनना पड़ेगा अगर रैंक अप करना है तो। लिजिट मेरे को देखो भाई, मेरे को देखो, मैं इतना अच्छा कंट्रोलर खेलता हूँ और मेरे को रहना देते हो तो हारता हूँ मैं। गेमर हूं ना, लाइन अप गेमर, लाइन अप गेमर। 11-5 चल रहा है भाई। भाई वो रेज ने रेफोर्सी जैसा अस्टाचल किया है, ये देखो वो हेवन से आया और यहाँ पे गया है अंदर।
Explain me this. What the hell? Okay, actually easy है वो थोड़ा. But that was good. Both side. Do you have lineups? Very bro. One enemy remaining. He's low. नाइस. कल मेरे को डायमंड बोले, आज मुझे गोल्ड बोले. भाई वो समझता नहीं है यार. शिनचैन भाई, शिनोबी भाई, सॉरी यार. थैंक यू सो मच फॉर द 40. यार फ्लैंक वाले को बहुत अच्छा मारा इसने. फ्लैंक वाले को बहुत अच्छे से मारा. गोल्ड सा लग रहा है जिस हिसाब से कॉम्स चल रहे हैं ना भारी आवाज में, उस हिसाब से गोल्ड लग रहा है. सिल्वर तो नहीं है ये बंदा. ये सिल्वर नहीं है ये बंदा गोल्ड है. ये बंदा गोल्ड है. Both side. ये बंदा गोल्ड है. फ्लैंक वाले को काफी अच्छा मारा उसने. भाई एरिस है नीचे. एरिस दिखी मुझे भाई. गोल्ड 1 या सिल्वर 3. आई गो विद सिल्वर 3. सिल्वर 1. आई शपथ भाई ये लोग अच्छा खेलते हुए. बहुत अच्छा खेलती पब्लिक. 2 बंदे बेट किया भाई. बेट गया तेल लगाने. राउंड निकाला वो मैटर करता है मेरे लिए. मैटर समझ रहा है. मैटर क्या बोल रहा हूं मैं. नहीं, that's not a good aim. Oh my god, that's a nice aim. Yeah, nice aim bro. डायमंड है ये बंदा. अबे ये शायद कल देखे थे अपन. शायद याद नहीं अभी. रेडियंट नहीं, घंटा रेडियंट नहीं है ये. काफी अच्छा एम कर रहा है यार बंदा ये. नाइट मार्केट 330. क्या रैंक लग रहा है ये भाई. ओ काफी क्लीन मारा. I'll go with Diamond 2. I'll go with Diamond 2. आइला अस्क्यांडिया भाई. सिल्वर 1 में जस्ट एक 32 किल्स और 10 असिस्ट वाला गेम ड्रॉ करके आया हूँ. अस प्लेइंग रेना लेमन. अगर तू वाइपर लेके उतना मारता ना तू जीत जाता. मालूम क्या. वाइपर या ओमन लेके माँ कसम तू जीत जाता भाई. मस्करी नहीं है सही में. ये गेम चालू करो भाई. अभी रेडी है. मैप कौन सा है अभी चैट. मैप कौन सा है. 330 या 530. शायद 330. नॉट श्योर. मैप कौन सा है अभी. डायमंड डीमंस. व्हाट इज द नेक्स्ट मैप. स्प्लिट है. अबे स्प्लिट तो अभी हुआ पाओ. पेरल है. ओके लेट्स गो मैन, लेट्स गो. ए भाई ये क्यूआर को स्कैन करके क्या आता है भाई. कुछ आ रहा नहीं है. रीड नहीं हो रहा वो क्यूआर. अबे चले गया यार वो क्यूआर. ये नहीं हो रहा था. उससे आता क्या है. Very structured team that punishes aggression on a map like Pearl, which is huge, right? The second you get a sniff of aggression on Pearl, you can easily roll off of that and hit the opposite site. That's what KRU is very strong at. Well, here's your Prime Gaming agent select, and would you know, Phoenix is on the menu. अच्छा बेंक्यू का साइट आ रहा है. Two duelists. भाई let's go. That's the best pick ever जिंग भाई. Best pick ever. KRU shouldn't be unfamiliar with because they should have. Best pick ever, bye. Have come into this match preparing. Best ever pick, no cap. Nothing's gonna stop Jing from eating up those orbs. He's a freak. He's gonna get like 3 to 4 ults this half.
And Good morning. Someone like Jing getting 2 chances in 1 round is just so Good unfair morning. to me. And the way they use the Blaze, which is the Phoenix wall, for those of you that don't nerd out like me, I mean, he actually gets massive value out of that wall entering the sites to get up like aggressively towards B long. So that's what I mainly play Omen, but can't manage to get over 20 kills. And solo queue silver 1 lobby is kinda dumb. आ गया. ऐसा बोलता. Thank you so much, Golden Boy and fellas on the desk. Yeah, Sean teed us up for this Phoenix pick, and honestly, given how hot of a play it was on split, how electric it was to watch them, if not for those pistols, it's a complete stomp. I can't help but think it's going to be really interesting to watch this Phoenix pick, the double duelist. Is this your brother? Yes, he's my brother. Softer dealing with aggression. Boom, 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 boom. Viper Harbor, one of the few teams who's actually really sticking to this compound pearl. Either way, I also love PRX's Phoenix. I think in addition to what Sean was talking about the wall for Jing, we also have a lot of molly combinations that he does. So yeah, we're ready to get into this. 10 भाई seconds crew for this crew pistol crew क्या round. चिल्लाती भाई public? Crew. Map 2. And already we've Lens seen Thomas there, 2 thank pistols you. lost from PRX. Crew. Success in all of them. This time it looks like PRX's approach is a lot less considered. In fact, it's crew going on the. ओ भाई सब 4 जन यहाँ पे एमिन पुश कर रहे crew के. दवाई का कॉल आ गया भाई. 4 ए पुश है. अभी देखो बी पे क्या भाग रही पब्लिक. वो देखो. बी से सीटी जाएंगी भाई सीधा पब्लिक. And the defensive wall that crew is throwing out is really cool, but it's just अकेला ये बंदा साइड पे. Through street. Dave is feeling a little bit of the pressure right off the bat. Has to take a step back. Oh, and look at this triple, this 4-player flank, but Devi's there to greet it. Devi and Mindfreak hold them back. They all fall. It's a perfect Flawless round for PRX to kick off this map. Flawless without util usage भाई. सिर्फ दवाई का एक डॉग था. For their first pistol after struggling on it so much on split. And again, the coin flip was taken by crew here. भाई ये एम चाहिए भाई उसके सामने 50 जन थे फिर भी उसने निकाला कैसा इकडे ते फ्रेम मध्ये येतं. But they just go through street and then the follow up too is just so nice. This is the thing about PRX. लेंस कौन से ब्रांड का है सिग्मा. Alone in street for so long and instantly Mindfreak is like, oh, he's alone, let me come fill his space. Yeah. And he's there to start trading with them and it's just perfect. मस्त मारा कुत्ते माफिक मारा. अबे यार ये लेना है मेरे को. बॉटल लेना है यार. डुअलिस्ट मेरे को बोरिंग लगता. व्हाट तेरे को डुअलिस्ट बोरिंग लगता? And thinking that the turret actually should get value in mid, but there's no push anyway, so it doesn't matter. There's that Blaze wall from Phoenix that Sean was talking about, how he gets space on both the B and A sides here. Blocking out Art, denying a push through on that. And they play full post here. Yeah, really. भाई उसने गोल्ड बड़ी लगाया. Planning to take this fight, and you can even see it in how Khelraay Sigma sharpness OP. You wonder लेंस कितने मेगापिक्सेल्स का है. मेगापिक्सेल्स से मतलब नहीं करता शायद लेंसेस का. ये मैंने लिया cause ये 1.4 एपर्चर है. मेरे को 1.4 एपर्चर चाहिए था इसलिए मैंने लिया. सही में मैन यूनाइटेड फैन हो आप? नहीं, मेरे को बस ये जर्सी पसंद आया. Instead, it's Devi who's the closest. Interesting too. भाई वो क्या स्मोक घुमा रहा था, अपना फ्लैश घुमा रहा था बे. A little delayed, but they are going to get out. Forsaken might stay, try to get a kill, not able to do so. And there we go. PRX win the first pistol, and they win the second round too. All right, अभी ओ समथिंग ने ऑप निकाला. समथिंग ने ऑप निकाला है डायरेक्ट. I mean, perfect anti-eco. शायद 4 सेकंड ने उसके लिए सेव किया था. नॉट श्योर, मैंने देखा नहीं था. They just got on site. Crew stacked the wrong place. Okay. Well, now check out what PRX are doing with this. The attack setup is B पे अभी पीक ले रहा है ये. It's just in the third round. ये तिकड़े पाए जाते रहे. Guy hasn't even taken a fight. He's already gifted with one. And he has one more A2 left over. B पे ऑफ शॉट. भाई B का सीन दिखाओ यार. And that's what I love about this. Oh भाई, I thought he will connect it भाई. I thought something जमा होने वाला है. That A main control that we just saw with the molly, the grab. No, they got a B peak and they are falling back. Another nano swarm thrown to layer on top of that. Yeah, and the flash over the top to make sure they can't see a thing. They're going for the reclear here, but this flash is going to be able to get Jing back in. The rest of the cavalry is coming up as well.
Essentially, Top try किया ना भाई? on the round. And look, Bogdan's law in effect. They've swapped it to Davai. अच्छा दवाई पे ऑफ आ गया अभी मैंने देखा ही नहीं भाई क्या भी ऑफ कर रहे भाई As a 5v3. They have the Seekers online. ओ भाई insane push हो रहा है There's surely no way that Crew can hold this back. भाई क्या push हो रहा है भाई Just so much power. They haven't had a chance at a bonus yet, but Save कर रहे वो लोग succeeded at converting. So these streaks that we've been so accustomed to throughout this series so far have started 3-0. off, and they're going to start real hot here. PRX on this attack. अरे चेयर का नाम जानने के लिए एक चैट में एक्सक्लेमेशन चेयर डालो आ जाओ Imagine had PRX won those two pistols. Yeah, it would have been a blowout. Yeah, and maybe given 13-4 or something like that. Yeah, given how this is starting. Oh, bye. That looked real shaky. खत्म है भाई उन लोग का है ना यही चले गया है अभी मोराली है ना एकदम डाउन हो गया है Tough here for Crew. I mean, they come out. उनका मोराली चल दिया है भाई Run that we have. I mean, क्या बोलते has हैं never seen something like that. Yeah. From going 0-9 and then qualifying for champs here. PRX, PRX. Here and they get matched up against PRX. How about coming in on a high and getting ओ भाई क्या स्टेडियम में चल रहा है बस भाई PRX PRX क्रू 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 भाई मेजर चल रहा भाई जो भी चल रहा है It's been a couple weeks. And now how do you deal with this? How do you deal with not having the success right out the gate that you did have during LCQ? How do you deal with not getting the wins that bring your momentum back up? Marshall for Kesnit, he's playing towards B. PRX intent on hitting A, at least initially. I mean, they're just working picks here with something's off. पूरा A push कर रहे हैं यहाँ पे PRX दोस्तों And I've talked about how they're so good at getting ops on the line. A पे पूरा एंट्री ओ भाई साहब यहाँ पे स्विच अरे भाई गन दे दो उसको Ooh, that's down. Actually, Melzer gets through it, but there's a follow-up turret. So nice. Unlucky, really. Careful. Okay. They swapped the op again. Yeah, and it was for something to be able to dash in and पूरा retake है दोस्तों 5v5 retake and they have no guns. Crew has no guns. Crew with an attempted retake here was just a Marshall. क्या होगा यहाँ पे जाने के लिए देखते रहिए Nice Molly there by Jinga bhai. You see the spams going through the utility. Maybe you catch a free one, something lucky to get you going, Jing on the flash, and there it is. और जमा कर दिया Jinga bhai को. You're gonna need a lot more luck than this, though. The gravity well, you see him snapping through, and well, that luck may be coming through, unless Mindfreak can do a lot about it. And so far, he can. Nags that having to run for the fences, and there's nowhere else to go. PRX up 4-0. Device. ओ भाई दवाई का ऑफ गया. कोई नहीं पैसा तो होगा ना हाँ पैसा है I know, but like yeah what is it? You just went AFK at the end of the round. The fist bump is more important, man. Vibes win championships. हाँ ना भाई वो चल ही है ला सीधा What do they do from here? Kesnit now with the आप मॉनिटर पे जितने भी टैब्स आप टास्क बार में चलाते हो उनको एक साथ स्क्रीन पर लेके चेंज करते हो अल्ट टैब Well, with Dave, he actually was hopping on split, remember? So this is kind of a new. What is that? I mean, he's literally playing ranked here. And did you see him smiling the whole time, all the way down? He knows, man. He knows what he's doing. क्या कर रहा भाई ये? Mindfreak 1 point away from having his ult online, and PRX have drawn a line in the sand mid. The molly to clear the little cubby that people play in so much. And the dog too to make sure, dude. You could have got, if somebody was there, they could have gotten stunned in that molly. To get followed up with by this push from something. Avoiding the op completely here. And again, they don't really pivot that often. Oh. There it is. Naxa with a good opener. Op A पे देखो ना अकेला op A पे Jing taking a little bit of damage. They're gonna have to rely Arbor देखो CT देख रहा है बाकी 3 जन B पे That's a nice ult जिंग को मिल जाएगा साइड पे आने जिंग भाई आ जाओ जिंग भाई He still has 2 flashes, so he can push this in if he wants to. वो जिंग पे पुल अप हो रहा है नाइस oh my god he's insane भाई he's too good भाई oh my god भाई कैसा मारते ये लोग यार Mindfreak could get taken out here by Kesnit late. He's got the op. बेचारे ने तो ऑफ निकाला था यार The jump spot with the smoke up right now. Oh, देख लिया ऑफ. They're saving now. No window found.
Dash अब देख expires. oh nice shot And yeah, Forsaken falls, but the round is lost. ये winnable था बे okay नहीं था it's over भाई 5-0 हो गया भाई Even worried about the flank coming through too. यार it's trolling hard हाँ ना बे मचांड कर रहे हो भाई मचांड hello freaky I mean, he just held on to them for so long. You think he didn't have to use a but single you know what मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी ये आएगा comeback आएगा PayPRX had already taken B. मैं अभी भी बोल रहा हूँ comeback आएगा And the other interesting thing is, you know, when we see a Phoenix on Pearl, or really anywhere, but on Pearl, भाई वो कांग कौन से टीम में चैट get him orbs, get those ults online, you know, get milks at as much as you can. भाई ये भाई मैं अपने इसका हो गया है भाई इसका हो गया है Looking at this right now. Yeah, he hasn't gotten a single one. EDG में वो क्या 3 kills, 1 death. Here's the Molly, the grab wall coming through as well. We've seen it before. That completely denies like Kesnet the space that he got last round. Yeah. But he will still be able to get on that angle. ऑपर को मॉली कर दिया यहाँ पे बहुत प्यारी तरीके से लेकिन ऑपर का एंगल नेवर माइंड ही मिसेस द शॉट उसको शॉट मिला था शायद समथिंग को शॉट पड़ा है बट समथिंग हिल हो गया And they have to heal something back up, you're right. This ult that Forsaken now has, he's even mauling it back right now. पूरा भाई साहब This is going to set up both something and Mind Freak. भाई क्या डिसीजन मेकिंग होता है ना वो डॉग को तोड़ने के लिए वो स्वॉर्म ग्रेनेड डाल रहा था सो दैट वो चांस ही ना बने कोई इन्फो का Has to get smokes down before he goes for it though. And he does. Both of those already blocking off the vision that Kesna would have had otherwise. अरे You see a nice side step. भाई वो लोग घुस गए बे Melser getting one with the sheriff once again. You see the buy is not great. Davies and Klaus with singers trying to make something out of nothing. भाई समथिंग एमबॉट माफी खेलता बे Just don't know how they will. Seekers invested and they're going to scale up. They're going to push behind it. Something's there to greed, man. Almost lands the second shot before dashing away. Dubai, patience on that kill. भाई वो सेकंड शॉट भी मार दिया था समथिंग खत्म कर रहे भाई And they pick up Kessen's खत्म कर रहे खत्म हाँ कसम पागल है भाई वो समथिंग एफएनसी वर्सेस बिलीबिली देखने वाला है नहीं 6 बजे ना वो मैं बोल रहा 2-1 होएगा वो 2-1-2 फनाटिक बिलीबिली एक मैच जीतेगा फॉर श्योर A lot of people were kind of preying on the downfall of him because he's never had a global tournament yet, but and who knows how this tournament proceeds. समथिंग इज एक्स हाँ ना भी अजीब खेलता वो बहुत हम लोगों का स्प्रे कभी कनेक्ट नहीं होता भाई ये लोग इतना शेकी एम रखते हैं जिंग और ये समथिंग फिर भी इनका क्या कनेक्ट होता है भाई My man just put his phone number. You just doxed yourself. Yeah. Bro, I'm really sorry for whatever you've just done to yourself. क्या किया उसने I also hear he has riot gun buddies to give away, so text him. No. Text him and get it from him. I'm sure he'll hook you up. उसने फोन नंबर डाला अपना That's so mean. That might be the meanest thing, cruelest thing you've ever done to somebody. उसने अपना फोन नंबर डाला था क्या मैंने नहीं देखा Oh man, yeah. What adjustments do you make on the other side of this timeout? We'll take a look once again as we turn our attention back to the map. You see the buy for crew. They've got plenty of rifles. Kesnet with the blades. What if बिलीबिली ने 2-0 कर दिया एफएनसी को What if बिलीबिली ने 2-0 कर दिया एफएनसी को But at this point, you're looking for क्या स्नैप हो रहा है हेड पे उसका हाँ ना भाई I mean, the slightest something to get momentum back your way. लिटरली स्नैप कर रहा हूँ मैं And maybe it's courtesy of the blades. भाई आप बर्ड्स को वैलोरेंट की मैच में कैसे यूज करते हो मैं ब्लूटूथ लगा के यूज करता हूँ भाई पहले ब्लूटूथ अडेप्टर लिया भाई उनका जेट का एम नहीं चल रहा है ऐसा लग रहा है भाई जिस हिसाब से समथिंग खेल रहा है ना उस हिसाब से बता रहा हूँ Something with the op. Creeping his way forward and dashing right back. Crew have done well to take a step back on this and absorb some of that pressure. What is that molly? We're gonna see the first ult from wow. My goodness, he never stopped moving. Fully holding W, fully getting a kill. And he's getting a chance to do it again. There it is, the shorty not finding it, but Mind Freak does. Devi's gonna get the spike down. Backside. Oh, bhai, they are owning them, bhai. They are owning them. Pearl not safe. Bro, they are owning them, bhai. Hello, Immune. He's going for more, man. Jing just doesn't care. Pure disrespect, and when you're fragging like this, when everything is vibing, I get it. 7 in a row now for PayPRX.
हाँ ना भाई FF और crew भाई crazy भाई receiving end of a half like this, or actually on the dealing end. The dealing end of a half like this has got to be shocking if you're crew right now. Just getting destroyed here on Pearl. And this is why they pick it, man. Yeah. That high turns into a real low real fast when you've got PRX across the screen. Yeah. हाँ ना भाई इनका एम अलग ही लेवल पे चल रहा है. Not hoping for it, but hopefully crew. ओ भाई 3 जन पुश कर रहे हैं और जिंग ने सबको ब्लाइंड किया. ओके जिंग ओके. ओ नाइस ट्रेड दवाई. Crew pushed into that. I mean that miserable setup that PRX have been dropping towards the main. 4v3 something up completely losing the round right away. No, yeah, and I think it was. I mean, there was a little bit less behind it, and then Jing's second flash doesn't fully curve around the wall. Yeah. 2 gram का mouse pad है क्या? The follow up from PRX is just so easy though. Now they can just follow the path of least resistance. Only one seeker goes towards this A site, but that's actually misdirection. That's something. Oh, he almost had him. Clotheslines him. Good idea. Almost got nags it while he's blind there. Orb scooped up. The only rifle in the hands of Kesnet. He's playing from safety right now. His DRX look to get the 8th round in a row. और वो डेविस का oh my god डेविस का ये आ सकता है अल्ट आ सकता है 1 किल पे. Excellent flash to buy some time, allow him to reposition. Looking for more, it's just a Marshall Davies, and yeah, he deals a little bit of damage, but it's just not enough, man. 8-0 दोस्तों 8-0. Dude, I swear, I watch Device sometimes, and I'm like, am I watching something? Because he just pulls out some of the most ridiculous shots. Some of the shooting style as well that I see from Forsaken from something where he's. हाँ ना भाई क्या खेल रहे हैं ना ये लोग. क्या शॉट मारा भाई. 5 बजे 6:30 को है वो मैच 6:30 को. Run the same sense, same keyboard, same mouse, and just. अच्छा नाइट मार्केट पता नहीं कितने बजे. Just play musical chairs. पिच पे देखना अब तक आया रहेगा ना उनके यहाँ पे. Different harbor wall out from the defense, a little bit further up to perhaps suggest. जैसा था आपको अच्छे से पहले खेलता था स्कूल डेज में. अभी मैंने बहुत साल हो गया खेला नहीं. The nice thing though for Crew is that it forces PRX to invest a little. लेकिन अगर ट्राई करूँगा तो खेल लूँगा. Deeper down B otherwise. Here. It's been so difficult for Crew to find these early fights because it's so difficult to deal with the A main pressure, that B link pressure that PRX. गेम में नहीं आता लेकिन लॉबी पे आता है. ये पॉसिबल ही नहीं है भाई. आदित्य एक बार तेरा चैट वापस पढ़ और अच्छे से लिख के बता मेरे को. भाई इसका पोज भी बहुत अच्छा है अभी. Remember that box. New addition to the map. He doesn't go up on it off the flash. I thought he would. Jinx the first up. He's tucked. But something was aware. It doesn't matter. The Reckoning causing problems. Throwing the attack into disarray. But that's where PRX are comfortable. They don't mind it at all. Look at how far up Jing is already. Klaus waiting on the other side. Lands the shots anyway. That's the first round they get. For Crew. 30 seconds left. For the first time all map. That's a nice dog. PRX add another win to their repertoire. Yeah, you win when you're big, and you win when you're down 1. Forsaken falling 2. Mindfeek. उनका ult भी आ गया अभी. 2v2 bro. They can't lose this bro. एक flank आ रहा है. Nice try. You're right. Finally a round to them bhai. Finally on the board. 10 rounds in, they're finally on the board. The final boss के against खिलाएंगे बेचारों को. नहीं बे अच्छा है ना उनके लिए. उनका थोड़ी ना एलिमिनेशन मैच है बिली का. अब उन्होंने एनआरजी को हराया है ठीक है. ओ भाई 1 HP पे मारा ये. हम बैक होएगा PRX lose क्या मालूम. Huge from Klaus. Huge from Kesnet to get the opener onto something. वो क्या स्मोक डाल रहा है वो? दवाई? PRX so. Oh नहीं दवाई नहीं उनका डिफेंडर स्वाइपर. So does Forsaken. Just instantly picks up this orb because there hasn't ever जिंग के पास भी अल्ट आ गया है. Down belong, so it's completely free for them. Molly as well to clear the back call. No real threat to that lockdown. The flash up, Jing takes the space and look at something. He's up in heaven. Do they know? Did you hear the updraft? Yeah, they did. They like did. They may have. को मालूम है. Dropped at his feet. He's got to reposition.
Heaven, not an option. What about Link? Can he snap? No. Melser takes care of him. The Seekers and the Trailblazer paving the way for Crew to try to get back out Finish team flash कर रहा तब से वही कर रहा हूँ. Oh भाई क्या post plant खेल रहे हैं. Two flashes. The pop through. Davis cleans it up. And now the Seekers भाई as well. कितना utils. 2 ult कर लिए. Nothing left on the table except for Nags at top. Or Assault, excuse me, and he falls. Oh, Crew keeps 3v1? How does Mind Freak 1v3 this? You can't count him out. That Cove just went up. It's not broken yet, so. He should be good. He should be good. Back हो रहा बाबा. Damage done here by Mind Freak is huge. भाई कितना crisp aim, game sense, fast micro repositioning सब कुछ. इसलिए तो वो लोग वहाँ पे भाई. PRX जल्दी निपटा लो, नींद आ रही है. साक्षी जी रुको जरा. हमको entertainment देखना है तो comeback हमको देखना पसंद होगा. ये क्या कौन से वे? इधर आ. क्या किसी प्रो बंदे ने ये रिप्लाई किया है क्या कि रेना क्यों नहीं खेलते प्रो प्लेज में? 400 लाइक की तरफ बढ़ते हुए बैठे. ओके. PRX अभी काफी स्लो खेल रही है. मिड लिंक जाने की कोशिश. नेक्स्ट के पास अल्ट. कैजनेट के पास अल्ट. कैजनेट का पोजीशन देखो चैट कितना ऊपर आ चुका है वो. He knows it's not A. Now they know it's B, so that's why 3 जन B पे खेल रहे हैं heavy. हार्बर भी अभी रोटेट हो जाएगा. That's a nice attacking ult. Indicates to me that they want to switch it up, but I'm seeing the exact same split coming through. Something और Jing यहाँ पे लिंक से आ रहे हैं. It's the exact same hit, even with the cosmic divide. That high tide should provide a little bit. Oh, something को एक मिला और एक साइड वो भी मिल गया. Oh भाई, oh what, वो क्या हुआ यहाँ पे? Naxit ने 2 मारे. मैंने देखा नहीं कैसे मारे उसने. 1v2 है. Come on, Kaznit भाई दिखा दो. Kaznit भाई. Not able to land the shots on the first blade. It's not aligned, but that op's gonna connect. One more. He's got one blade. And Kaznit with the shot to inject some life into the Latin American representatives. And he was instantly up on his feet for that one. That looked like CNET's clutch from before, but full blind at the same time. What is this? The first a gift. The second was a gift too, man. Watch the pop off here too. भाई माइंड फ्रिक बोल रहा है भाई खुद. हे करे भाई, हे करे. All it takes is a spark. All it takes is a spark. माइंड फ्रिक खुद बोल रहा है हे करे. You may have had a spark, but there's an overwhelming fire on the other side. भाई क्या कमेंट्री. रिकी भाई आप फ्री हो? नहीं कोई नहीं. मैं ही बना लूंगा ये शॉट्स. इसके शॉट्स डालेंगे कल दोपहर को. Just a little ahead. A little bold, a little confident perhaps. Look at how invested Crew are into holding A. They didn't see something. They didn't check it. They didn't check it. Oh no. अरे यार something बना लेता है यार अभी. Land the shots. And my goodness, I didn't think I'd say this, but Crew have somehow भाई मोमेंटम आ गया भाई के पास अभी. 8-4 हो गया भाई. 8-0 से 8-4. आई साहब इसे कहते हैं हैकिंग. Could it be 4 in a row? Or could it be Divide with the 1v4? He's got a free B site to go for the splant, looking for an extra pick before going for भाई ये 1v4 निकाल सकता है दवाई, क्योंकि वो दवाई है भाई. More difficult for him. Oh, he tucks up ahead of the alarm bot. अबे नीचे ऊपर एक. Just go for the swing together, all flood at the same time. Yeah, because there's no. ईगल से मारी इस बार. Again, managing to stabilize after the shellacking that they took in the opening of this half. This could have been a flawless half. भाई समथिंग हगा मालूम क्या, समथिंग के 3 किल थे उधर. But they get all 4. I mean, you see it on some of the members of PRX too. But they don't play Sova. इस पे ये वाले मैप पे Sova से अच्छा फेड है. Is it going to be enough to get to the other side? We'll see. Yinsu standing by with a special guest in Sergio Aguero. Hey! By Sergio Aguero, bonafide legend
question, and of course the owner of Crew, and Dan's gonna help me with some translations. Now, first of all, how are you feeling right now to know that your team went on a miracle run to be playing on the international stage? ¿Cómo te sientes en este momento con el recorrido que han tenido? अरे उसको समझ गया. Muy contento de los chicos de estar acá en el mundial. No es fácil, todos son muy buenos jugadores, así que हाँ गेरो को इंग्लिश नहीं आता. que puedan hacer un buen torneo, ¿no? वो लिटरली मैन सिटी खेलता था. अच्छा उसको समझता है बोलता नहीं रहेगा. Now you're someone that competed at the top level for a very, very long time, so you know how these things go. So what was the biggest piece of advice you gave to your team, especially in circumstances like this when they're behind? अबे भाई मैंने पी स्पोर्ट्स खेला नहीं है तो मेरे को पता नहीं यार. Como jugador, ¿qué consejo le das a los jugadores con una situación como esta? Bueno, no, ellos saben muy bien, en esta situación tienen que estar súper tranquilos. मेसी को भी कहा आता है. मेसी कहा इंग्लिश टीम के लिए खेला है. ये उसका पूरा करियर इंग्लिश टीम के लिए खेला है. मेसी को इंग्लिश आता है लेकिन आई गेस I'm not sure. To be calm in sports, what you have to do पता is be नहीं. calm and be confident and push forward. That is the way that you do it. Oh yeah, they are looking confident in the last few rounds. And lastly, Kesnit, what do you think about him? No, Kenny la verdad que es un buen jugador y bueno, por suerte lo tenemos con nosotros y Left corner में tense. el mejor jugador que tenemos y los otros chicos son también muy buenos, pero bueno, Kenny es el más destacado y esperemos que pueda ser un buen. भाई लेकिन वो 2 शॉट्स हाँ ना भाई उसके शॉट्स बनेंगे कल. And we're really happy that he's with us. We're really lucky that he's with us. He's a star player. Everybody else is really good, but he's the one that's always. भाई दीदी ने चाकू लगाया ले उनके कान में. All love for Crew from the faithful in the crowd, and well, I mean, they've given them a reason to be excited. The last 4 rounds going their way, keeping this Agero भाई OP. as we turn to the second half. Bro. Ball with me on the call. Paper. यार क्या sad हुआ यार Agero का तो यार. Oh, look at this. Crew is trying to dodge the sky. Agero यार बारसा में आया. फिर मेसी चले गया. मेसी चला गया. तो भाई Agero भाई तो सीधा फुटबॉल से ही चले गए. बहुत बुरा सीन था यार. ओके पेपर एक्स यहाँ पे ए पुश कर रही है दोस्तों. अच्छा नहीं अभी ये साइड चेंज हो गए. क्रू यहाँ पे ए पुश कर रही है. And they've got a lot to deal with too, not just that high tide that you see, but it's been set up for the Viper Wall to cause problems too. And there's भाई साहब ये केस नहीं देखो किधर है. And there's a flash on the other side. देख लिया उसको शायद नहीं देखा नहीं. Something 29 HP and now presence found, but Kesnit's given up on it. They're not concerned with him at all anymore. They need to turn attention to the fight that's happening on the site. Fortunately for them, Melzer and Nagzet are able to keep them back. Something and Devi have to do this on their own. Oh, it's going to require a little bit 1v2 1v3. Oh 1v3. Nagzet cleans him up. भाई ये लोग पागल है वे. In favor of Crew. They're really dominating these super important rounds. When it comes down to it throughout this series so far, but 5 in a row as well. They're starting to really get या में लोगों को सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर जज किया जाता है. Seems exactly what Aguero was talking about. I started from yourself भाई. खत्म हो जाएगा ये चीजें. I feel. मैं तो नहीं करता भाई इंग्लिश में बात इतना ज़्यादा. मैं तो मोस्टली हिंदी में ही बात करता हूँ. मुझे पसंद है. आती नहीं अलग बात है लेकिन. Marshall in the hands of something. It's the biggest thing you're going to have to deal with. And he's instantly been peppered. Has to take a step back. And look at this orb that's being placed here by Nags. It's actually the attack side. 4 जन यहाँ पे PRX के B पे आ चुके हैं दोस्तों. ये इको राउंड लेकिन समथिंग भाई ने यहाँ पे लेके आया है मार्शल. For the players who are trying to jump peek down B long. That sort of thing makes it really difficult. You can see Paper X trying to get some info. Something just peeked on top, and that's actually going to call the rotate. Maybe in time here for this A hit. भाई बहुत अच्छा रोटेट किया PRX ने ये. We have to remember the weaponry is still not great. Devi's going to be the first here. He's got nothing but a classic. Still one flash at hand. And it was in the wrong place. Kesnit's able to find a window to get a kill onto Jing. The second is snappy. क्या मारा भाई Kesnit ने? That one was fully blind. जमा कर दिया ला भाई को. अरे माँ क्या फ्लैश. अरे माँ क्या चापटी हो रहा है भाई. Exit हो गया भाई लोग.
And this comeback is in full effect now. Yeah. Beautiful stuff from them. And you're right, that flash miss gave some misinformation to PRX. And KRU's able to really punish that. I think PRX expected a little slower of a hit, which has been the cadence that KRU has gone for throughout this series so far. Once again, dodging this flash. And you can see Molly inside of the smoke. Right, Kazan bhai. Catching the orb. I mean, it's almost the Oh bhai, pre-fire mein bhar diya Jinko. On the other side of the map takes down Nag, so. Wait, look at where he was. Yeah, all the way deep. He pushed way up, used the dash to get out, and he's gonna Oh rotate. bhai, something देखो कहाँ पे मारा है उसको. Something अभी हिल के लिए इतना पीछे गया है. Oh भाई, be free मिल रहा है यार KRU को. Without the wall, without the orb here from KRU, it's going to be difficult to actually maintain the same amount of presence that you normally have with the Viper Harbor without your Viper. Yeah, and I think the Cascade 2 is going to be the tip ahead of time for them to rotate over. You see PRX have already dropped both duelists back towards... भाई क्या भी spam करते रहे ये लोग. Oh भाई, सब जिंग ने चापटी दे दिया, झिंगा दे दिया सीधा. Only 3 remain. भाई 3 जन देखो ना 3 जगह पे. हाँ चलो जमा हो गए ये लोग, जमा हो गए. Good round by. Finally round आ गया. 6-9 हो गया सीधा. Spread themselves a little thin because they find themselves down in numbers and one falls and there's just such a massive gaping hole in what's left. PRX are able to pounce on that. We've seen rounds like this on Split where KRU has to rely on 3 individual 30 bombs. seconds left. That was just 2-player approach. In this 2v5, you can hear a pin drop in the arena right now. On the map, it erupts with a kill in favor of Melser. 10 seconds left. Device positioning here should be able to secure the round. Klaus, no idea as to what's going on. Melser's left in a 1v4. अबे info तो है वो पीछे. Get away and find some space. Just watching his teammate. Yeah. The vibes. जिंग हगासा है भाई, कितना फ्लैश करेगा टीम को. Gonna get the defuse. PRX will get to 9. 1-1 होना रहेगा. मेरी नींद सो जाओ आप. Needs to get, they get all 3 when KRU's won the If Ace I super chat, okay. Wow. There's that initial pick. I mean, it changes everything. भाई जिंग ने बहुत अच्छा मारा वो. Denying information on this map, like I just spoke about in the prior round. And look at this. भाई उनके हार्बर ने भी थोड़ा विफ किया है ना तो वो लो नहीं होता. जिंग के पास अल्ट आ गया है भाई. ये मिल्सर के पास अल्ट आ गया है. ओ 4 जन बी के तरफ. 4 सेकंड ओडिन लिया है. Instead, he's set up double doors. Right where Davies is currently posted up, but the turret will be the contact. And you see him rotating back towards B, where you're right, 4 members are. Yeah, but the Odin spam is going to be a lot more difficult now to get through. He's going to have to use it through the high tide when the execute comes in, and Melser does have the reckoning too. मेरे जैसा फिनिक्स खेल रहा है. Far enough. चला ओडिन चलाओ भाई. ओ भाई सब ओडिन चालू हो गई. PRX is playing. पीछे चले गए अभी वो लोग. गए वो लोग पीछे चले गए भाई. It's almost a death sentence to continue through with that execute idea. भाई देखना कैसा 2 जन रोटेट कर लिया ऑलरेडी. रीड है बे. You've got the turret, you have a flash, just cleared out Art to get some info. Man, it's crazy that Forsaken at the beginning of the round ended up putting his turret deep through that double doors. Yeah. That's the sort of thing, if it goes unpunished, gets you insane value. Yep. And it does. दोनों फ्लैश में कोई भी रिवील नहीं हुआ है दवाई के. दवाई के पास अभी फ्लैशेस नहीं है. But then still they are holding a. बस बी पे अब प्लेयर्स काफी अच्छे हैं. और ये अटैकर्स का अल्ट आ चुका है. जिंग का भी अल्ट खुल चुका है. जिंग भाई का अल्ट टूट गया है. प्लांट हो रहा है यहाँ पे क्रू की तरफ से. Forsaken with the Odin. What is going on? Where was that from? Just deep down flowers. Oh, it's a disaster once more. And a Prime Gaming flawless once more for PRX. Show me the spam. What Shilai in the machine. world was that? आई चगावत. लेमो मोमेंट हो गया है. शिलाई मशीन मोमेंट. Take a look at that replay once again. Yes. Oh भाई OP gamer. OP gamer भाई. Starting to move away from that and they run into the spam. Are you single G? Yes Didi. And we got a timeout here.
as we get glimpses in what must be a 4 a.m. watch party or something like that in Singapore. That sun was coming through though. Yeah, a little bit. Either way, yeah. इधर भी भाई, इधर भी हम रात में देख रहे भाई गेम को, मजा आ रहा है हमको यार. Again, Paul, it just feels like when Crew are starting to get some footing, there's just something that PRX do that's different. They just flip a switch, whatever it is. And honestly, this feels a little bad to say, but it kind of feels like PRX are toying with them a little bit, right? Like keeping them in it, and then as soon as you get a little confidence, they're just punched right back down. Yeah. That's the thing though. Other teams wouldn't be able to. हम नूबड़े करते हैं. हाँ भाई, 4 तो नूबड़ा है. Going after getting punched on pistol, after continuously to. 4 तो नूबड़ा है भाई. Like this to Crew. But PRX is the worst at it. I mean, the best at it in a sense. The worst to play against when you're trying to get that momentum going. Sure. And I have to point out as well, PRX, Alex has not talked to the team one time other than the Crew timeouts because he hasn't called one. I mean, he hasn't had to. And Crew is down to 0, so. Crew के timeouts खत्म हो गए. Without help of Coach Adam. पाई नहीं है Crew का. 11-6 होने वाला ये राउंड. भाई जीत गए भाई PRX. There it is, the gravity well on the second flat. भाई what a play, what a play. All for 1 kill, a costly one though. भाई तू फ्लैश कर ले भाई. जिंग भाई तू फ्लैश कर दे बैट. And they just scale so hard off of that. That's so difficult to keep track of in the moment. You've got the sky flash, okay. Oh, there's a Phoenix flash too. Yep. Oh, there's another sky flash. Yep. And it's impossible to turn them all too. The Yeah. sky, like, the combination of Sky Flash with any other flash in the game is really tough, but in specific, the Phoenix Flash, which is already Watch party का highlights क्यों नहीं डालता? But if you dodge it and then the Sky Flash is behind you, you're getting flashed anyways. Right. It's technically उनका content, not mine. Here, turret is there, but they can just walk right behind it. Oh, I think it just got recalled too. And meanwhile, It's technically मेरे game, वो technically मेरे gameplay का highlight नहीं है, वो उनके gameplay का highlight है. Getting so much information on the rest of the map. Turret got broken early in B-Link. Again, setting that up aggressively, and there goes one of the flanks. Davies is fallen, and the flank is all that remains. Nags out with the Sheriff, him against the world. Been able to upgrade a weapon. Might have to just save it. हाँ ना भाई, झिंगा भाई danger flash कर रहे हैं भाई, back to back, back to back, back to back. Decision to be made with the 15 seconds remaining, how to use it effectively. Yeah, scrap a little, see what you can do to hurt their economy. 10 seconds left. And he is close to a pit, so 2 kills and a death. Like the stream, boys. If you're new, subscribe to the channel too. Get him to 1 orb away, so. But alas, none of those things will be found. And so we turn our attention to the next round where PRX get just a little bit closer to disposing Crew. Hey, Mr. Only Relatable Streamer, what does this mean, bro? Only Relatable Streamer. Thank you, Robin भाई. कैसे हो? Nice DP. भाई आज मेरा प्लेट हो गया सोलो क्यू. क्या बात है अनुज भाई. OP गेमर हो आप तो. 400 भाई क्या करेंगे फिर, हाँ ना? वैसा कंटेंट को मोनेटाइज नहीं कर सकते, मालूम तुमको? ओ भाई साहब यहाँ पे PRX B पुश करते हुए, ए भाई 1v1 हो रहा है. What is happening? Checking back sight between the flash and the spam. You never expect that to be going down. क्या कंट्रोल किया है PRX ने? You expect that Odin to be deep back, and it's also covering up the. भाई वो लोग को अटैक करने ही नहीं दे रहे. लोग लिटरली 5 जन B पुश कर रहे थे. अच्छी भेज दिया भाई PRX ने. You know, I've used this word to describe PRX a couple times, but I can't help but go back. नया गिवअवे हुआ आज 500 प्लस हाँ 1000. And again, मजा आया लेकिन आज भाई. So off, they did clear the alarm bot, so that's quite good. But Forsaken gets a rap as being somebody who, like, you know, doesn't really play a normal Sentinel role, and here he's getting so much value on all of his pieces of util, while also fragging out and going for, you know, pretty creative Odin plays as well. ये पे फेक वॉल किया, अभी मिडलिंग जा रहे हैं और मिडलिंग पे उनके लिए भाई 4 सेकंड बाई का ओडिन है. 4 सेकंड बाई चालू हो जाओ. अरे 4 सेकंड बाई पीछे गए. The Cosmic Divide comes in before. That's blocking B-Link. Forsaken is happy to chill here. Yeah, they're stuck on the other side of it. That cove will provide some cover and allow them to get out. Klaus is still behind it. Davies has his own. भाई 4 सेकंड बाई BTS दे रहे सबको. Spam just a little bit off, not guessing in the right place. And there's that lockdown.
Backside taken by Melser and next. Round निकाल लिए बे वो लोग. It's a tough spot to deal with the lockdown too. And Mindfreak, if he gets that kill, this is a doable round. But now that they're pushed back so far, it starts to look a little impossible. That was so bold. क्या हुई साक्षी आपको? Well, I don't think anything's ever possible when you're talking about PRX, and they're flooding out from heaven into the cloudburst, trying to find space, and it is ill-advised. 7-11. Chat, is this a comeback? Is this a comeback? I'll call it 13-9. How do we keep finding ourselves in these positions where we're talking about Cruise? That 2 games I saw, very creative content. Keep it up. Thank you. Especially at the beginning of the game, when they went on that 8-0 streak. Yeah. The fact that we are here, pretty impressive. भाई कितने जन वो चीज में टैग करते हुए कर रहे हैं मालूम क्या उसे कहते हैं टैग योर फेवरेट क्रिएटर टैग योर फेवरेट क्रिएटर भाई वैसे रील्स जो बना रहे हैं ना मेरे को वो बंदे लोग मिलने चाहिए उनको चापटी मारूंगा मैं और जो टैग कर रहे हैं वैसे रील्स में उनको तो पप्पी दूंगा भाई श्रीमान भाई और मेरे को एक बंदे ने एक कमेंट में टैग किया है भाई कितना प्यारा है Doesn't have the Odin anymore. वो वाला कंटेंट अभी फेड अवे हो रहा है वो चैलेंजेस वाला वीडियो कंटेंट मैं बहुत लेट उसके ट्रेन पे चढ़ा हूँ ओ भाई कितने क्लोज है ये लोग भाई सोने से पहले डू यू फील प्राउड बाय मेकिंग सो मेनी पीपल स्माइल I never think about that. I never think about it that way. I think about what you guys have given me, what God has given me. I feel thankful about it. That's what makes me feel happy. Firsthand the disrespect he shows in the face of utility, but he cannot disrespect Davies like that. Crew refusing to go away. भाई साहब 11-8 हो गया. Kesna has come alive multiple times throughout this series. He's just been beasting. That's why he's one of the highest rated duelists in this tournament along with something. Oh, don't do this now. Oh, don't do this now. That was almost the fourth. चलो भाई अभी क्लोजिंग करने के लिए यहाँ पे टाइम आउट लेना इज इम्पोर्टेंट डिजर्विंग स्ट्रीमर्स को ग्रो करता देगी जस्ट सैटिस्फाइंग थैंक यू भाई प्रे करते रहो भाई बाकी हम मचाते रहेंगे Number one, you have to figure out how they got through that alarm bot. So Forsaken has a question to be answered, and then you also want to start getting a difference in setup coming here because it's the same 1-4 over and over. And you're also looking at a game where something has cooled down a lot since that first half. Sure. And he's trying. Your soul should always be a happy soul. I pray for it. Hey, thank you so much, Robin Dada. Thank you so much. भाई साहब एलेक्स भाई अभी बोल रहे कि हगासो मेरे को सोने जाने का है फटफट बंद करो मेरे को कॉल आ रही लाइव उधर से वॉच पार्टी से भाई इतने जन जगे हुए 6 बजे सुबह के तुमको कुछ लग रहा नहीं है 11 राउंड हुए ले 2 राउंड जीतना है सिर्फ निकाल लो ना भाई निकाल लो यार सोने को जाने का है ये कैमरा मैन मुंह में घुसा रहा है चालू भाई चालू करो We'll see how things look on the other side of this timeout. Again, crew put together the last two, sticking around in this. मेरा कॉलेज खत्म हो गया भाई अभी मैं फुल टाइम यूट्यूबर हूँ We might get the knives battle between the two Jet players as well. And finally they're going to go towards this A. ये फ्लैश के लिए देखो कैसे छुपे हैं ये लोग लेकिन फ्लैश तो कोई कर रहा ही नहीं है ओ भाई साहब ये वही कर रहे हैं यहाँ पे पुल आएगा फ्लैश आएगा स्टन आएगा सब आएगा ओह बट लुक एट दिस ओह अच्छा जिंग अल्ट करेगा अभी जिंग यहाँ पे जिगल करते रहेगा नाउ हिल अल्ट कर दे भाई कर दे डरता तो नहीं है तू एंड दे आर एक्सपेक्टिंग द अल्ट एज वेल सो ये अच्छा पोजीशन नहीं अल्ट करने का ओके PRX is known to regress at a moment's notice. That's why they put up the turret. That's why they re-dog through mid. It's interesting. Spot Jing again is repositioned. They know what's going on. It's interesting too. Baby Bay was talking about it on the desk. You want to fight fire with fire. Them knowing that he's just 1 point away from the out and not taking the fight. Holy smokes! Something. What? Yeah? You just tired of the game? You want to finish this off? Dude, that's such a high level play right there from something.
The dog spots Jing. They see the reposition. They think that push is going to come through Art instead, and something. भाई ए घुसरे भाई what is this? Oh my god, ए पे rotate दे दिए सब लोग. I mean B पे. But my freak did his work भाई. अरे यार ये समथिंग अच्छा कावत क्या मारता है ये. What danger gamer है. हाँ दवाई भाई खुद को स्मोक फ्लैश कर लो आप. और जिंग ने बहुत परफेक्ट टाइम पे अल्ट खोला लेकिन हक दिया. No way. 3v3. Okay 3v1. GG 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 GG. अच्छा और एक राउंड है. GG GG GG. I thought KRU was doing a great job in that initial approach to the round, but then PRX come through with again super high level play from something. It's such a good call. अब भाई आज से 10 साल जब आपकी शादी हो जाएगी तभी YouTube करोगे क्या? हाँ I love doing this भाई. Not sure तभी गेमिंग करूंगा या कुछ और, बट गेमिंग तो कंटिन्यू रखूंगा लेकिन कुछ और भी जरूर करूंगा. I like to vlog. Jing is so far up down long already. Debai is there, tucked behind him. अरे माँ कसम भाई भराभरी कर रहे भाई. खत्म कर दो भाई इनको, जिता दो. At the ready. That's crazy too, because that's usually a cue that they're going to play up close and try to punish you as you fall off of that molly position. अकेला वाइपर यहाँ पे लर्क कर रहा है. अरे भर दीस भाई को, भर दीस. अरे भाई लोग विफ विफ कर रहे भाई. जीजी हो गया, जीजी हो गया भाई. 2v4 है ना? हाँ 2v4 है. Seekers used and spike planted. A 2v4 just to stay alive. जीजी हो गया दोस्तों. Something waiting this out. Oh, and now going forward, he's got. उसको नहीं दिखा कोई. He has no idea. अरे 1v3 निकाल लिया राउंड, निकाल लिया. वेल प्लेड भाई. अबे दो पीछे से आ रहे इसके. We saw it on split. We'll see it here on Pearl. And inevitably Klaus falls. PRX take down another. GG's 2-0 भाई. 2-0. Put themselves in contention to challenge Fnatic in this tournament. Because there's key factors that you can. मैं बोला ना भाई उसने टाइम आउट उसलिए तो लिया. बोला भाई हगासुल सोने जाने का है नहीं तो पैसा काटूंगा. EDG का किसके अगेंस्ट मैच है आज? And you're looking for that magic that they had at Tokyo. And all three of them were there. I mean every single box was checked. जायंट गेमिंग्स कौन है बे? जायंट गेमिंग्स बहुत ठोक्या टीम है क्या चैट? यूरोप का टीम है. जायंट गेमिंग बोले तो ओपी. उसमें कौन है? राइम, फिर नुक आए, क्लाउड. इसके बारे में सुना है मैंने बस, बाकी किसी के बारे में नहीं सुना है मैंने. इंटरेस्टिंग होगा वो. हाँ क्या, लेकिन इंटरेस्टिंग तो आज मेरी स्लीप होगी भाई. नहीं अभी मेरे को जाने सोने क्योंकि सुबह के थोड़े प्लान्स है कुछ चीज़ें करने की. तब जाके 1v9 वाली वीडियो आएगी अपनी. ठीक है तो अभी हम भाई लोग तुम लोग को एक बार बस एक बार है ना मेरे को ये दिखाने का. ये देखो एक साइड वो भी मिल गया. ओ भाई जी ये भी जी है. हाँ ये देखो क्या मेरे भाई 30 सेकंड है देखो. अरे एग्जिट मत कर ऐसा. एंड there's a fact that in Giants gaming everyone is above 90 kg. सही में? भाई कैमरा क्या दिख रहा है यार. भाई 9 के 9 जन गए उधर. ऑफिशियल राउंड विन ना अच्छा. हाँ चल भारी होता. मेरा एम्प्रेस खत्म हो रहा है. Oh wonder Pallo, why you were so bad. भाई क्या मारा हो यार ये. Look at this bro. Look at this. ये क्या LCQ विनर शेमडिया जायंट्स. हाँ क्या
1 2 3 4 5 5 bullets 5 heads. देखो अभी One enemy remaining. I won. 10 seconds left. No, I won. Jeez! 1 bullet! 1 bullet! Every hit! Bro! My ult's ready. Key. कल दोस्तों फाइनली अपने कैमरा को हम बाहर लेके जाने वाले हैं। एक प्यारे बच्चे की तरह हम इसको बाहर लेके जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसका स्ट्रैप ढूंढ रहा हूँ कि इसका स्ट्रैप कहाँ पे। बिना स्ट्रैप के मेरे को इसको बाहर नहीं लेके जाना है। और बाहर शूट के लिए मम्मी रहेगी, मम्मी को सिखाना पड़ेगा कि क्या शॉट चाहिए मेरे को। जो शॉट चाहिए ना मेरे को ये 1v9 वाले वीडियो के लिए, वो वाला शॉट देख के तुम लोग है ना इतना खुशी मनाने वाले हो, तुम लोग जश्न मनाने वाले हो, जश्न। ठीक है, तुम लोगों के लिए शॉट, ठीक है, वो तुम लोगों के लिए है जो मैं बाहर जाके शॉट लेने वाला हूँ। तुम लोग वो शॉट देखने के बाद तुम लोग जश्न मनाओगे वो चीज़ का। वो चीज़ को तुम्हारे पता नहीं भाई, तुम लोग व्लॉग 2-3 दिन में डाल देंगे हम। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ व्लॉग पे इतना, बट कर देंगे। अच्छा व्लॉग है, ऐसा नहीं है कि बेकार है, बट थैंक्स फॉर मेकिंग मी स्माइल टू स्लीप भाई। व्हाट डू यू मीन? एनीवेज यू किल 2 स्क्वाड इन 1 राउंड। या ओवर हाइप मत करो। नहीं ओवर हाइप नहीं है, वर्थ द हाइप है भाई, वर्थ द हाइप है, वर्थ द हाइप है जो दिमाग में है मेरे। Hey, Bonzax, thank you so much for joining in the Power Gang Gold. Welcome. It was a good game today. ओवर हाइप नहीं कर रहा बे, जितना मतलब वर्थ है भाई, वर्थ है, वर्थ है। मीटअप, व्हाट इफ आई टेल यू गाइस कि मीटअप होने वाला है जल्द, लेकिन वहीं पे होने वाला है जहाँ पे पहले हुआ था। वो थोड़ा सा ये सीन है, लेकिन या मीटअप होने वाला है। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन बॉयज। दैट वाज इट। अभी मैं निकलता हूँ, कल थोड़ा काम है। बाय, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट स्ट्रीम। I know how to play on 78 ping plus initiate is difficult. All G bro, that was just a game. We all play for fun, nothing else. I go. बस आइसक्रीम खाएगा, खाएंगे भाई, भाई आइसक्रीम खाना है माँ कसम। मेरे को आइसक्रीम क्या भाई, मेरे को है ना क्रेविंग क्या चीज़ की फट्टे होती है मालूम क्या? मेरे को क्रेविंग होती है भाई, मुझे ऐसा बैठना पसंद नहीं है स्ट्रीम। मुझे क्रेविंग होती है बहुत ज़्यादा केक की, चॉकलेट केक। वो बहुत हैवी क्रेविंग होती है, हैवी। आज से ऐसे ही रखूंगा कैमरा, क्या बोलते हो? ऐसे ही रखूंगा, गेम खेलते टाइम भी है ना कैमरा ऐसे ही रखेंगे। Hey, bye. Pure flexible, I think. And one more is that a lot of people talk about how to counter your playstyle as a team, and a lot of teams they feel like they have what it takes to counter you. But from your perspective, what kind of playstyles do you think you guys are good against, and what kind of playstyles do you think you guys are bad against? I would say maybe I think we are good at any playstyle, but just I think if you guys want to counter me, you guys have to like diff our aim, I guess. That's it. That's it? Yeah, if you guys win our aim, I think definitely we will lose. Not many people are going to be able to do that. Thank you very much, Forsaken. One more time, guys, Forsaken. Thank you guys. For joining me. And we're going to be finding out very soon who PRX are going to be going up against, because after this, EDG and Giants will be joining the stage. Oh, bye. It's the plucky. फ्रॉम माई साइड खरीद। अभी नहीं भाई, अभी कौन खाएगा? अभी घर पे आएगा ना आइसक्रीम तो मम्मी मेरे को दूसरे दिन आइसक्रीम क्या, मेरे को फिर खाना नसीब नहीं होगा भाई दूसरे दिन। चलो भाई लोग, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर गाइस एंजॉयड। मिलते हैं अपन कल के स्ट्रीम पे। कल होगा अपना और एक स्पेशल स्ट्रीम, वहाँ पे हम लोग करेंगे, क्या करने वाले कल भाई मैं भूल गया। क्या मस्त लाइटिंग लग रहा है। कल क्या करने वाले अपन? नाइट मार्केट रिवील करेंगे अपन डिस्कॉर्ड में बैठ के, सो मज़ा आएगा। क्या मस्त कैमरा लग रहा है।
क्या कैमरा है यार, नजर ना लगे किसी की भाई। कल जाएंगे इसके साथ शूट कर। लेट्स होप एवरीथिंग गोज गुड। ओके बाय बाय। थैंक यू सो मच, सी या। भाई ये लाइटिंग है ना, क्या क्लीन लग रहा ना, ये येलो येलो ऐसा लग रहा है अभी यार, कुछ ऐसा चला दे अपन मस्त ऐसा। तो जा हज भाई, क्लच भाई, बाय 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 बाय। तो जा, हाँ भाई अभी जाता हूँ सोने जा। बाय 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 बाय। माहौल बना के जा रहे हो, व्हाट डू यू मीन? Anyways, bye bye guys. Thank you so much for tuning in. Sakshi is catfishing. Bye bye. Take care. That was a joke. Take it as a joke. My bad. Bye bye. Good night.